Guys, how are you? I hope आज मैं बहुत amazing करने वाला and I'm really excited because today I'll be making sure that I do a reading marathon. What it is all about. In today's video, I'll be reading these four books. इस लाइव स्ट्रीम में मैंने एक चैलेंज लिया है. ये बहुत टाइम लेगा मुझे पता है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 चैलेंजिंग. एंड लेकिन जब मैंने सोचा ये मेरे अंदर थॉट आया कि आई हैव टू डू इट बिकॉज आई फील दैट पीपल हु वॉच मी probably are interested in books or probably they know me, that's why they watch these videos. Yeah, for it's something which they like doing, whatever small number of people, but I know that a lot of people watch book videos on YouTube, on this particular platform. So I wanted to make a video, a unique kind of a video where I'm really inspired and motivated एंड आई कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो कि बुक नहीं पढ़ पाते हो फॉर वेरियस रीजंस, इट कुड बी दैट यू डिडंट हैव द टाइम, या फिर आप में मोटिवेशन नहीं बची, या वो बुक पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें. मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जिसमें मैं ये 4 बुक पढ़ूँगा बैक टू बैक. इट माइट टेक द होल नाइट, मुझे पूरी रात लग जाए, बट आई विल कीप डिस्कसिंग दिस बुक विद यू बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट आई in a way गिव यू दैट फीलिंग दैट ये हो सकता है. जब मैं अपने घर पे इतनी सारी बुक्स पूरी रात पढ़कर ख़त्म कर सकता हूँ, जब आई कैन गेट मोटिवेटेड टू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई पैशन, सो मैं कर पाता हूँ, लेकिन आप भी वो बुक पढ़ सकते हो. दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस लाइव स्ट्रीम. एंड आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ. ये बुक अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आई एम नॉट श्योर. इट्स बाय एस राधाकृष्णन, आवर एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और इन्होंने बुक लिखी है. इट्स अ स्मॉल बुक अबाउट 100 पेजेस लॉन्ग, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 95 पेज लॉन्ग. फिर हम बात करेंगे सॉरी हाँ यही बुक, सॉरी, द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज जोग्राफी. मैंने लास्ट मंथ ली थी, मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट बनाई थी. और ये बुक है अराउंड 251 पेजेस, so that's about 256 pages. So that's about 356 pages. फिर हम पढ़ेंगे very popular book of during last year, and still it is, I mean, the Almanac of Naval Ravikant. And ये book है, um, you know, I don't read non-fiction book that much, but this month I've kind of gotten this habit of reading a lot of non-fiction books. So ये 200 पेज की है, that's 550 pages. और ये मेरा favorite topic है. I wanted to read about Shivaji, his experience. मैं कोई मूवी नहीं देखना चाहता था, मैं एक बुक पढ़ना चाहता था एक ऑथर की, और ये बुक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगी एक ऐसी चीज़ की जो कि we all have heard of Shivaji, Chhatrapati Shivaji, but very few know a lot of detail about what Shivaji was, what kind of the kind of enigma he was. हमें पता है उन्होंने फाइट किया मुगल्स के अगेंस्ट, बट क्या उनकी ज़िंदगी थी, ये बुक इस पे लाइट थ्रो करती है. एंड आई विल रीड दिस टू. सो दिस मेक्स इट 4 बुक्स. यूजुअली मैं अगर ये बुक पढ़ना शुरू करूँ तो it might take me 2 weeks to finish these 4 books, at least 10 days, because ये छोटी सी है, शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में. लेकिन ये 2 बुक, स्पेशली ये बुक, ये टाइम लेगी. तो आई हैव थ्रोन दिस चैलेंज दैट आई विल रीड दिस बुक, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर इस समय टाइम निकाल सकें, या फिर join on this reading challenge with me and read more books. And I want to hear in the chat कि आप ये बुक कोई बुक पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे. लेट मी नो इन द चैट्स. एंड मैं सीट से तब तक नहीं उठूँगा जब तक मैं इस बुक को ख़त्म ना कर लूँ. ये मेरे लिए चैलेंज है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, एंड आई वांटेड टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू डू दिस, सो दैट वी टुगेदर एज रीडर्स डू दिस. अगर आपको ये थॉट कैसा लगा, चैट में बताइए मुझे. If you like this kind of endeavor, please like this video. And if you want to know more about such kind of videos in the future, subscribe to the channel or share it with your friends. तो start करते हैं इस बुक से. मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं. इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं सीट से उठूंगा नहीं. So I will have water here, which is here in a bottle. In the meantime, इस बुक में जब मैं पढ़ूंगा तो I'll read it slowly first, and I'll see how the pace develops, builds. और मैं आपको हर सेंटेंस को सुना के
बताऊंगा कि ये सेंटेंस में क्या मतलब है, एंड धीरे धीरे जब आपको वो ग्रिप आ जाएगा बुक का, देन आई skip to, like, I'll read the whole paragraph and I'll read it out to you loudly so that you can hear me, and I'll also explain the meaning of it. और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बताऊं आपको कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो. दैट इज़ द होल आइडिया. दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम, कि आप लोग इंटरेस्टेड हो. तो इसमें काफ़ी एनर्जी लगेगी. इसके लिए मेरे पास पानी है कि गला ना सूखे. And at the same time, I would like you to let me know in the chat that how do you like this whole effort? How do you like this whole thing? Let me know. And I want your participation, guys, because agar participation nahi hoga, then the purpose of doing this live stream really falls flat. And I don't want that. I want people to join in and contribute to this reading session. So, pehla book hai The Hindu View of Life. Let's start. So the first page, we'll start with first page. It says chapter 1, religious experience, its nature and content. Let me know if you are able to get what I'm trying to tell you sentence by sentence first. Start करते हैं. Chat box open है. अपना comments यहाँ पे लिख सकते हैं. Do that. Let me know. Let me know your thoughts. I'm just typing it so that you start away as well. Let me know your thoughts, guys. All right, so here we start. At the outset, first page, chapter 1, Hindu View of Life, is by S. Radhakrishnan, and the first chapter is Religious Experience, its nature, and content. At the outset, one is confronted by the difficulty of defining what Hinduism is. That's the first sentence. इसमें राइटर कह रहे हैं कि शुरुआत में ही, एट द आउटसेट, राइट इन द एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही वन इज कन्फ्रंटेड. कन्फ्रंट मतलब उसे सामना होना, बाय द डिफिकल्टी ऑफ डिफाइनिंग व्हाट हिंदुइज्म इज. कि ये डिफाइन करना कि हिंदुइज्म क्या है, ये बहुत मुश्किल है. इसे आमना सामना करना है सच्चाई से बहुत मुश्किल है. To many, it seems to be a name without any content. कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक नाम है जिसके अंदर इसका मतलब कोई अंदर इसके माल मसाला कंटेंट नहीं है. बस एक हिंदुइज्म मतलब हिंदुइज्म एक नाम है. Not many people know about it. Is it a museum of beliefs? क्या एक संग्रहालय है कि म्यूजियम है विश्वास का, हमारी हमारी मान्यताओं का? A medley of rights, एक धुन है राइट्स की. medley means धुन. RITES राइट्स का मतलब if I were to ये चीज़ भी मैं करूँगा. लेट मी गेट माई मोबाइल फ़ोन एंड हैंकरचिफ ऑल्सो. पसीना आ रहा है. मौसम चेंज हो गया है यहाँ पे. इट्स रियली रेनी आउटसाइड. थंडरस्टॉर्म है दिल्ली एनसीआर में, तो ये मौसम बहुत अच्छा है. दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक लेट्स डू दिस लाइव स्ट्रीम. तो it says, is it a museum of belief, a medley of rites, or a mere map, a geographical expression? या फिर एक सिर्फ एक मैप, एक नक्शा ही है हिंदुइज्म जहाँ पर है इंडिया में, एक ज्योग्राफी का एक्सप्रेशन है, एक तरीके से बता रहा है. Its content, if it has any, has altered from age to age, from community to community. The ease with which Hinduism has steadily absorbed the customs and ideas of people with whom it has come into contact is as great as the difficulty we feel in finding a common feature binding together its different forms. एक बहुत लंबा सेंटेंस है और ये कह रहा है कि हिंदुइज्म जिस आसानी से, ईज से हमारे रीति रिवाजों में और हमारे आइडिया में, लोगों के आइडिया में घुल मिल सा गया है, has steadily absorbed the customs with whom it has come into contact is as great as the difficulty we feel in finding a common feature binding together its different forms. और मतलब इस तरीके से घुल मिल गया है, लेकिन इतना ही बहुत महान काम है, ऐसा हो गया है, हमारे कस्टम्स, हमारे बिलीफ्स में घुल मिल गया है, जितना कि डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट अलग अलग तरीके के प्रकार के हमारे जो फॉर्म्स हैं, उसको जोड़ना और उसमें एक समानता ढूंढना, एक कॉमन फीचर ढूंढना, ये ऐसा ही है. मतलब इट्स सो डिफिकल्ट कि वी हैव टू फाइंड कॉमन फीचर्स. बट इफ देयर इज नॉट अ यूनिटी ऑफ स्पिरिट binding its different expression and linking up the different periods of its history into one organic whole, it will not be possible to account for the achievements of Hinduism. तो कहते हैं कि अगर ये यूनिटी ऑफ स्पिरिट ही खत्म हो गया,
तो हम एक हिस्ट्री में, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में जो कि ये डिफाइन किया गया, इसका मतलब ये है कि ऐसा आज का हिंदू मैं हूँ और हिंदुज़्म में मैं बिलीव करता हूँ, तो वो हिंदुज़्म, वो कस्टम, वो रीति रिवाज मेरे जो हैं, वो एक 1000 साल पहले एक हिंदुज़्म को जो फॉलो करता था, जो हिंदू था, उसके भी वही विचार कस्टम से जो आज तक चले आ रहे हैं। तो ये जो कॉमन स्पिरिट, ये कॉमन आत्मीयता हम शेयर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जो कॉमनैलिटी है ये ही जिंदा है। इसी की वजह से ऑर्गेनिक होल, मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर, मतलब हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा है, ऑर्गेनिकली सब बढ़ा है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा हिंदुइज्म के अचीवमेंट्स को जानने की। तो ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस में है। द डिक्टम, डिक्टम मतलब शायद, डिक्टम आई कैन नॉट गिव यू वर्बैटम कि व्हाट डिक्टम मीन्स, एग्जैक्टली व्हाट डिक्टम मीन्स, बट डिक्टम मतलब कि तरीके से किसी को कुछ कहना, जैसे अ, कहा गया। लेट मी गूगल इट, और ये भी गूगल है कि मैं आई गूगल इट इन केस आई डोंट नो द थिंग। तो गूगल में इसका मतलब है अ फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स, मतलब किसी महत्वपूर्ण आदमी से बताना, उसकी तरफ से एक अनाउंसमेंट होना कि ये ही सच है। तो डिक्टम दैट, तो इसका मतलब कि सच ये है कि इफ़ वी लीव असाइड द ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर, नथिंग मूव्स इन दिस वर्ल्ड which is not Greek in its origin has become a commonplace with us। ये कहने का मतलब है कि अगर हम इस बात को छोड़ दें, इस थॉट को छोड़ दें कि कि दुनिया में जो कि ग्रीक से नहीं आता है, वो ऐसा कुछ भी चीज़ अगर ग्रीक से नहीं है तो वो चीज़ सही नहीं है, या वो मूव नहीं करता है बेसिकली। जैसे अमेरिका से में हेजमनी, मतलब पॉपुलर देश है, तो उसमें से जो भी वो बोलता है वो सही आपको मानना पड़ता है। और इसी तरीके से उस टाइम पे शायद ग्रीक के बारे में कहा गया था ऐसा। तो but it is not altogether true. Half the world moves on independent foundation which Hinduism supply। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि आधी दुनिया इस फाउंडेशन, इस बिलीफ, इस आधारशिला पे मूव करती है जो हिंदुइज्म ने बताया, क्योंकि ये बहुत पुराना थॉट है। China and Japan, Tibet and Siam, Burma and Ceylon look to India as their spiritual home। इतनी सारी कंट्री, चाइना है, जापान है, सिलोन मतलब श्रीलंका, तिब्बत और बर्मा, ये सारी देश में से हिंदुइज्म को फॉलो करके, इन्होंने रिलीजन फॉलो करके ये देखते हैं हमें एक ऐसे हिंदुइज्म को एक गाइडिंग लाइट, स्पिरिचुअल होम। Civilization itself has not been a short lived one. Its historic records date back for over 4,000 years, and even then, it had reached a stage of civilization which has continued its unbroken, though at times slow and almost static course until the present day। तो ये कह रहा है कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म, जब से आया है ऑलमोस्ट 4,000 साल, और 4,000 साल से भी पहले, एंड इवन देन, उस समय वो एक स्टेज पे पहुंची थी जहाँ पर उससे पहले से वो चली आ रही है और अभी तक है। तो ये बहुत लंबे सेंटेंसेस है, क्योंकि ये बुक जब डॉक्टर राधाकृष्णन जिंदा होंगे, जब उन्होंने लिखा था, ही लिव्ड अंटिल 1975, लेकिन जिस समय उन्होंने लिखा होगा शायद कम उम्र के होंगे। तो उस समय 1960s 50s में सेंटेंस बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे। इनफैक्ट मेरे पास एक बुक है यहाँ पर, दिस इज़ द बुक अ पैसेज नॉर्थ। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। अगेन विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। ये एक राइटर ने लिखी है श्रीलंका के, उन्होंने बुक प्राइज में शॉर्टलिस्ट हुए थे, जीता नहीं था उन्होंने, उसे प्रॉमिस ने जीता, एक बुक है जो मेरे पास है। अगेन, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टू यूज दैट इन्होंने बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखे थे इस नॉवल में, जो कि बहुत कम होता है अब। तो ये उस टाइम की बात है जब बड़े बड़े सेंटेंस लिखे आते थे। तो डोंट गेट वर्ड कंफ्यूज कि ये इतने बड़े सेंटेंस क्यों हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक है, राइट। बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर टुडे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। शायद ये बुक आप खुद ना पढ़ें, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, शायद उसके वजह से शायद आपको इंटरेस्ट बन जाए। लेट्स सी, let me know in the comments। Again, nobody has commented, but I hope somebody does and tells me कि ये आपको कैसा लगा। So let's continue. Though people of different races and cultures have been pouring into India from the dawn of history, Hinduism has been able to maintain its supremacy, and even the proselytizing, I'm sorry, I cannot pronounce this word, creeds backed by political power have not been able to coerce the large majority of Indians to their views। Again, एक बहुत लंबा sentence, लेकिन let me just brief you as to what it says। It says कि
कई लोग के रेस और कल्चर के मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध। बौद्ध तो खैर बौद्ध बुद्धिज़्म इंडिया में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस रेस के लोग इंडिया में आए, स्पेशली मुस्लिम और क्रिश्चियंस, जो कि बैग्ड थे, जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, मतलब उन्होंने इंडिया में राज किया, मुगल शासकों ने, Christians ने, through British in East India Company, and all these people were backed by political powers, और जो हमें जिन्होंने हमें कोर्स किया, मतलब हमें पुश किया, हमें एक तरीके से ज़बरदस्ती की हम पर, और हम पे थोपना चाहा उनकी व्यूज़, लेकिन फिर भी हिंदुइज्म हैज़ बीन एबल टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी. In the Hindu culture possesses some vitality. Vital मतलब important, vital मतलब जिसमें energy हो, youthfulness हो. तो Hindu culture possesses some vitality which seems to be denied to some the other more forceful currents, जो कि कुछ according to Dr. S. Radhakrishnan forceful currents को नहीं दी गई थी. ऐसी vitality उनके पास है, Hinduism के पास है, Hindu culture के पास है. It is no more necessary to dissect Hinduism than to open a tree to see whether the sap still runs. Again, ये एक सेंटेंस है, इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, बट व्हाट इज ट्राइंग टू से इज दैट कि हिंदुइज्म को बार बार चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है जानने की वो क्या है, क्योंकि वो ऐसे हुआ कि आप किसी पेड़ को फाड़ें और उसमें से देखें कि उसमें जड़ों में जो पानी डालते हैं तो कैसे ऊपर पहुंचता है. आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था साइंस में कि सैप नीचे गया पानी, वो सैप ऊपर चढ़ा, और वो पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा पानी, ऑब्वियसली चढ़ेगा ना पानी जड़ से, हम तो जड़ में पानी डालते हैं. दिस इज व्हाट इट सेज. सो हम ऑलमोस्ट 1.5 बुक पेज ख़त्म कर चुके हैं. अभी 98 पेजेस मोर टू गो. 90 no, 94 93 pages more to go. I hope you're getting how big this book is. हम already 15 minutes cross कर चुके हैं इस live stream में. But I want you to tell me in the comments right now if you get to see it, and if you, I mean, if somebody is live, I'm just seeing one person, and that too, I believe, say somebody I know. But if at all this live stream, you are able to see at some point in time, let me know. The Hindu civilization is so called since its original founders or earliest followers occupied the territory drained by the Sindhu, the Indus River system corresponding to the northwest frontier and the Punjab. तो हिंदू सिविलाइजेशन इसलिए कही जाती थी कि हिंदू, क्योंकि ओरिजिनल फाउंडर्स जो थे इसके, जो वहाँ पर शुरू में थे, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब पंजाब के आसपास के एरिया में थे, और जहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करती थी, इसलिए वो हिंदू कहे गए. ये बहुत से लोगों को पता है. दिस इज रिकॉर्डेड इन द ऋग वेदा, द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास. सो दैट्स न्यूज़ फॉर यू इफ यू डोंट नो. ये ऋग वेदा में बताया गया है, द ओल्डेस्ट वेदास. तो बुक पढ़ के ये भी फ़ायदा होता है कि आप अलग अलग नॉलेज मिलती है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड यू बिकम नॉलेजेबल विच यू कैन यूज़ इन वेरियस अदर facets of your life. The Hindu scripture which give their name to this period of Indian history. The people on the Indian side of the Sindhu were called Hindu by the Persian and the later Western invaders. वेस्ट के लोगों ने और मुस्लिमों ने उनको फिर स्पेशली ईरान, पर्शिया के लोगों ने, जो ईरान है अब, वहाँ के लोगों ने इसे हिंदू कहा, क्योंकि वो इंडस सिविलाइजेशन के पास थे, इंडस रिवर के पास रहते थे. In the Punjab, the civilization flowed over into the valley of the Ganges, where it met with numerous cults of primitive tribes. In the southward march, the Aryan culture got into touch with the Dravidian and ultimately dominated it, though undergoing some modification from its influence. अभी कह रहा है कि ये उस रीजन में लिमिटेड नहीं रहा, और ये हिंदू या हिंदू वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू का जो कल्चर था, ये जब ये आगे बढ़े तो नीचे आए, और नीचे उनको साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चर मिला, जो कि साउथ इंडिया के लोग हैं इस टाइम पर, प्रेजेंट descendant of those Dravidians which are from Tamil Nadu, Kerala, and all of those areas. So वहाँ पर उनको एक कल्चर, मतलब उनको डोमिनेट किया हमने, आर्यंस ने, हमने मतलब आर्यंस ने, और मिक्स मैच हुआ. As a civilization extended over the whole of India, it suffered many changes, but it kept up its continuity with the old Vedic type developed on the banks of the Sindhu. The term Hindu had originally a territorial and not a creedal significance. अब क्रेडल मतलब शायद क्रीड से होगा, तो इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम पे जो हिंदू का मतलब था वो बेसिकली एक टेरिटरी में जहाँ पर वो लोग रहते थे, इंदस के आसपास के थे, इसका मतलब वो उससे सिग्निफाई करता था.
Aboriginal tribes, savage and half civilized people, the cultural Dravidians, and the Vedic Aryans were all Hindu, as they were the sons of the same mother. तो अबॉर्जिनल ट्राइब्स जो थे, हाफ सिविलाइज लोग, द्रविडियन जो कि कल्चर्ड थे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एंड वैदिक आर्यंस, वेदा को जो मानते थे आर्यंस, वो सब हिंदू थे, वो सब एक ही माँ के बेटे थे. The Hindu thinkers reckoned with the striking fact that the men and women dwelling in India belonged to different communities, worship different gods, and practice different rites. और हिंदू थिंकर्स ने सोचा कि जो औरत और आदमी हैं, मतलब लोग हैं रहने वाले जो इंडिया के, वो डिफरेंट कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, और अलग अलग तरीके मानते थे, मतलब कल्चर मानते थे, तौर तरीके अपनाते थे. As if this were not enough, outsiders have been pouring into the country from the beginning of its history, and some have made for themselves a home in India and thus increase the difficulty of the problem. अब ये कहते हैं कि ये सब काफ़ी नहीं था, तो बाहर के लोग इस देश में आने लगे, शुरुआत से इस देश के इतिहास के, एंड कुछ लोगों ने इंडिया को ही अपना घर बना लिया, और इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया. प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम डिफरेंट कल्चर की. प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम डिफरेंट थिंकिंग की. प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम डिफरेंट गॉड्स की, डिफरेंट राइट्स की. तो इस बात को एस राधाकृष्ण इस बुक में लिखते हैं. एंड हाउ वाज हिंदू सोसाइटी बिल्ट अप out of material so diverse, so little susceptible in many cases to assimilation, and scattered across a huge continent measuring nearly 2,000 miles from north to south and 1,800 miles from west to east. कि कैसे, अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ वाज हिंदू सोसाइटी बिल्ट अप आउट ऑफ मटेरियल सो डिवर्स, कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने डाइवर्सिटी में ये हिंदुस्तान बना, ये देश बना, हिंदू सोसाइटी बनी, जहाँ पे इतना बड़ा महाद्वीप है, जहाँ जो कि ऑलमोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी 2,000 मील की दूरी है, और लेफ्ट टू वेस्ट टू ईस्ट इसका 1,800 मील की दूरी है. It cannot be denied that if in a few countries the spirit of cultural unity spread through a large part of the land, and racial stocks of varying levels of culture became steeped in a common atmosphere. अब ये वही बात कहते हैं कि ये बात को हम जुटला नहीं सकते कि पिछली कुछ सदियों में जो स्पिरिट है यूनिटी का, जो कि स्प्रेड है पूरी दुनिया, मतलब पूरे भारत में, एक कॉमन एटमॉस्फेयर बन गया उसका, कि जो कि बिलीव करता है कि हम अलग अलग कल्चर्स तो हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, ये वो मानते हैं. द डिफरेंस अमंग द सेक्ट्स ऑफ द हिंदूज आर मोर और लेस ऑन द surface, and the Hindus as such remain a distinct cultural unit with a common history, common literature, and common civilization. ये कहते हैं राधा कृष्णन की ये सिर्फ सतही है डिफरेंसेस, बहुत ही मतलब सतही हैं ज़्यादा, लेकिन अंदर गहराई में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि सब लोग एक जैसे हैं. इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब यही है. मिस्टर विंसेंट स्मिथ observes India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity far more profound than that produced either by geographical isolation or by political superiority. ये कहते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिटी है जिसको आप यू नो किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, वो है इस देश के अंदर. That unity transcends the innumerable diversities of blood, color, language, dress, manners, and sect. In this task of welding together heterogeneous elements and enabling them to live in peace and order, Hinduism has had to adopt her own measures with little or no historic wisdom to guide and support her. The world is now full of racial, cultural, and religious misunderstandings. We are groping in a timid and tentative way for some device which would save us from our societal conflicts. Perhaps the Hindu way of the approach to our problem of religious conflicts may not be without its lesson for us. अब मैं ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, आप इस बात से बिल्कुल if you are watching, if you will watch, I'm sure you will, some people will come in this live stream. और मैं इसका थोड़ा सा मैंने अभी तक इसके लिंक शेयर नहीं करे हैं, तो hopefully that will impact, and I want to share the links of this session on my various other mediums. मैं चाहूँगा कि people come in and log in. So what I'm doing right now is going to various social media pages and hoping that people watch it. And I am live. Please
Click the link. Okay. All right. So let's see where the link is. Okay. Alrighty. So we are live, and okay. It's such a difficult task when you're going live and you want to initially when you want people to participate. It just becomes so difficult. But that's the beauty of it. We have to do it no matter what. So can we share this? Okay. Get shareable link. I've got it. All right. So all right. So I'm posting it, and I've posted it. All right. Okay. Alrighty. Okay, so I posted on Facebook, and I hope people join in. It's already 10:30. I'm doing it late because I think most of you, are working, and it's a weekday, and I was hoping that more and more people will join in, and that's why I chose this time. You already, you have had your dinner, and then you're sitting idle. Maybe you would get the time to read it. So in a nutshell, मैं आपको बता दूं आप इस बुक के बारे में ये जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत डिवर्सिटी है लेकिन हमारे पास ये एक यूनिटी भी है फंडामेंटल यूनिटी इसके बारे में बात की है तो हम पेज 4 पर हैं इस टाइम पर एंड वी हैव टू फिनिश दिस बुक एंड देन मूव ऑन टू द सेकंड एंड देन द थर्ड and then the fourth book. I hope you're getting what I'm trying to say to you. It is a challenging task. अगर आप ये book वीडियो इस समय देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम और in future you want to read book, then this is the time. Or I want you to get inspired and read books so that you get in this habit of reading. यही इस लाइव स्ट्रीम का आइडिया है. दिस इज द पर्पस ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम टू मेक यू फेमिलियर. और अगर आपको कुछ और दिमाग में है प्लीज़ click the hit the chat and let me know in the chat what you think about this live stream. How do you want it? Do you have any ideas? Whatever you have, let me know. So we are on the fourth page and we will start reading again. Now, what I'll do here now, I'll read the paragraph quickly and explain to you in a gist what it is all about. Then as we get used to this idea, we'll move to one page and we'll try and do it in a bunch of pages. And hopefully you will keep understanding what I'm trying to tell you. We'll make it interactive. We'll make sure that it is interactive. Let me know what you think. Let me know what you think in the chat. So the Hindu attitude to religion is interesting. While fixed intellectual beliefs mark off one religion from another, Hinduism sets itself no such limits. Intellect is subordinated to intuition, dogma to experience, outer expression to inward realization. Religion is not the acceptance of academic abstractions or the celebration of ceremonies, but the kind of life or experience. It is insight into the nature of reality, darshan, or experience of reality, anubhav. This experience is not as emotional thrill or a subjective fancy, but but is the response of the whole personality that the integrated self to the central reality. Religion is a specific attitude of the self itself and no other, though it is mixed up generally with intellectual views, aesthetic forms, and moral valuation. तो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं. ये बात कर रहे हैं कि what is religion and what is Hindu way of religion. Why what Hindu religion is all about. क्या उसमें बारे में सोच है. तो कहते हैं कि हम दिमाग से तो सोच सकते हैं कि ये रिलीजन उस रिलीजन से अलग है, डिफरेंस है. लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि हम सोचें कि इंटेलेक्चुअली ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है. इस रिलीजन में कुछ और बात है, ये बिल्कुल अलग बात है. ऐसा बिल्कुल नहीं है.
क्योंकि इंटेलिजेंस हमेशा इंट्यूशन को दबाता है, और प्रथाएं, डॉगमास जो कि हमारे दिमाग में बनी पड़ी हैं, जैसे सती प्रथा थी, बाकी जो भी चीज़ें थी, वो अनुभव को दबाता है। और बाहर देखने का जो नज़रिया है वो अंदर के आत्मानुभव को दबाता है। और रिलीजन कभी भी जो भी पढ़ाया गया है और उसकी जो बातें हैं उसको यू नो एक्सेप्ट नहीं करता है। और सेरेमनीज़ हैं, मतलब अलग अलग लगता है कि जैसे अब आज गणेश पूजा हो रही है, आज ये पूजा हो रही है, वो नहीं है रिलीजन। रिलीजन वो है जहाँ पर आप नेचर, रियलिटी के दर्शन, उसका क्या नेचर है उसका अनुभव करें और एक्सपीरियंस करें उसको। मतलब बेसिकली रिलीजन इज़ ऑल अबाउट अनुभव, एक्सपीरियंस। आप उस रियलिटी जो कि रिलीजन की है उसका अनुभव करें, अलग फॉर्म में, मेडिटेशन, योग, मंत्र, जो भी हो सकता है। एंड दिस एक्सपीरियंस इज नॉट एन इमोशनल थ्रिल, ऐसा नहीं है कि भावनात्मक मज़ा है कुछ ऐसा, और एक फैंसी है, मतलब एक बात है, बस अनकड़न बात है, जो कि मतलब एक मोटा मोटा जैसे कहते हैं ना, दर्शन में लिख दिया कि ये है वो है। रिलीजन बेसिकली अनुभव है, इसके बारे में मोटा मोटा बात कर रहा है। इफ आई एम गोना बी as straight as I can with you. So that's this paragraph. We'll move on to the next. Religious experiences of a self-certifying character. It is swa स्वतः सिद्धा, मतलब खुद ही सिद्ध होने वाला, ऐसा हो, यही रिलीजन होता है, वो रिलीजियस एक्सपीरियंस कहलाता है। It carries its own credential, but the religious seer is compelled to justify his inmost conviction in a way that satisfies the thought of the age. If there is not this intellectual confirmation, the seer's attitude is one of trust. Religion rests on faith in the sense of the term. The mechanical faith, which depends on authority and wishes to enjoy the consolidation of religion without the labor of being religious, is quite different from the religious faith which has its root in experience. तो ये मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि रिलीजन वो नहीं होता है जो कि हमें बताया गया है, इंटेलेक्चुअली हमें दिमाग में भरा गया है, या फिर एक मैकेनिकल तरीका है कि भैया पूजा करना है, अर्चना करना है, और या फिर किसी अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, कि ये पंडित जी हैं, ये गुरु हैं, तो ये इनको सारी नॉलेज है। रिलीजन वो सब नहीं होता। रिलीजन होता है जहाँ पर आप, उसका जो जड़ है वो अनुभव में है, कि उस आप आत्मिक अनुभव, जिसे कहा है स्वतः सिद्धा, कि सेल्फ आप खुद ही बताते हो कि ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने अंदर महसूस किया है, ये मेरे अंदर जागृति हुई है इस चीज़ की, वो रिलीजन है, ये रिलीजियस एक्सपीरियंस है, एज पर एस राधा कृष्ण। वेस्ली कोई होंगे इसमें जो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फेथ एंड आंसर्स नॉट एन ओपिनियन नॉट एनी नंबर ऑफ ओपिनियंस पुट टुगेदर बट दे एवर so true. It is the vision of the soul, the power by which spiritual things are apprehended, just as material things are apprehended by the physical senses. मतलब ये एक विजन है किसका, आत्मा का। द पावर बाय विच स्पिरिचुअल थिंग्स आर एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड मतलब समझा जा सके, एप्रीहेंड के कई मतलब होते हैं, एप्रीहेंड मतलब रेस्ट करना, एप्रीहेंड मतलब समझना, एप्रीहेंड के एक और मतलब होता है एंटिसिपेट करना, आई एम सॉरी, एंटिसिपेट करना। तो एंटिसिपेट करना मतलब उम्मीद करना कि ये है। तो देखिए ये फ़ायदा होता है बुक्स पढ़ने का, आप नए नए वर्ड जानते हैं तो उसको आप ढूंढते हैं, तो उसकी मीनिंग समझते हैं, तो उसको आप यूज़ करना समझ जाते हैं। इट हैपन्स विद प्रैक्टिस। So again, I'm stressing on the fact that this might sound a difficult book, and that's why I took it first, because I want to tell you कि difficult books भी पढ़ी जा सकती हैं। उसका तरीका ये होता है कि you get this habit of rereading, and that's how you get the whole thing in your head. तो that is the idea. तो तो विश्वास क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम, कि that power by which spiritual things are apprehended, जस्ट एज मटेरियल थिंग्स एप्रीहेंड बाय फिजिकल सेंसेस। मतलब हम फिजिकल सेंस से क्या जानते हैं, अगर हमें कोई मिठाई की खुशबू आ रही है तो हमें पता है मीठा है, क्योंकि इसमें चीनी है, इसमें मीठा लगता है ज़बान पर, है ना। कोई बदबू आ रही है तो हम नाक से सूंघ लेते हैं, कोई अच्छा दिखता है तो हमें आँख से पता चल जाता है। इसी तरीके से सोल, रिलीजन, अगर उसका आपको समझना है एप्रीहेंशन, तो वो आत्मिक अनुभव समझेंगे। ये कह रहे हैं, ब्लाइंड बिलीफ इन डॉगमा इज नॉट द फेथ विच स्लेव्स, इट इज एन अनफॉर्चुनेट लेगेसी ऑफ द कोर्स विच Christian theology was followed in Europe, that faith has come to cannot connote mechanical adherence to authority. If we take faith in a proper sense of trust or spiritual conviction, religion is faith or intuition.
तो ये कह रहे हैं कि इट्स एन अनफॉर्चुनेट लेगेसी ऑफ द कोर्स विच क्रिश्चियन थियोलॉजी हैज़ फॉलोड इन यूरोप, कि क्रिश्चियन की जो थियोलॉजीज़ है जो कि यूरोप में फॉलो की गई है, ये उसका अनफॉर्चुनेट एक तरीके से लेगेसी है, एक तरीके से उसका एक क्या कहना चाहिए, लेगेसी मतलब जो मैंने मैंने दी है, विरासत है, अ, कि एक मैकेनिकली हमने एडियर कर लिया कि भैया ये पोप है या फिर ये चर्च में ये मेन है, मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं ये। एंड इफ वी टेक फेथ इन प्रॉपर सेंस ऑफ ट्रस्ट और स्पिरिचुअल कन्विक्शन, रिलीजन इज फेथ और इंट्यूशन। तो इनके हिसाब से, डॉक्टर राधाकृष्ण के हिसाब से, कि रिलीजन क्या है, विश्वास है या फिर एक इच्छा है, बिलीफ है, ये रिलीजन है। We call it faith simply because now we have moved on to the fifth page. Now I'll quickly read this one page and then the second, and I'll explain to you what it talks about. And hopefully later on we'll read the whole chapter and give you a brief of what it is all about. क्योंकि challenge होगा। What do you think? What do you think about this book so far? Let me know. अगर ये स्ट्रीम आप देखते हैं later on, let me know guys. I want you to get on with it and let me know what you think about it all. आपको क्या विचार हैं आपके, please 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 let me know, because I want to know that side of this live stream, and we will move on further. Okay, so we we call it faith simply because of spiritual perception. We are on page number 5, page 18 पे chapter खत्म होगा. um, Simply because spiritual perception, like other kinds of perception, is liable to error and requires the testing processes of logical thought. But like all perception, religious intuition is that which thought has to start and to which it has to return. In order to be able to say that religious experience reveals reality, in order to be able to transform religious certitude into logical certainty, we are obliged to give an intellectual account of the experience. Hindu thought has no mistrust of reason. There can be no final breach between the two powers of the human mind, reason, and intuition. Beliefs that foster and promote the spiritual life of the soul must be in accordance with the nature of the laws of the world of reality with which it is their aim to bring us into harmony. The chief sacred scriptures of the Hindus, the Vedas, register the intuition of the perfected souls. They are not so much dogmatic dictators, transcripts from life. They record the spiritual experience of souls strongly endowed with a sense of reality. They are held to be authoritative on the ground that they express the experience of the experts in the field of religion. If the utterances of the Vedas were uniformed by spiritual insight, they would have no claim to our belief. The truths revealed in the Vedas are capable of being re experienced on compliance with ascertained conditions. We can discriminate between the genuine and spurious in religious experience not only by means of logic but also through life, by experimenting with different religious conceptions and rating them with the rest of our life. We can know the sound from the unsound. The Vedas bring together the different ways in which the religious minded of that age experienced reality and described the general principle of religious knowledge and growth. कि मैं ना आपको अपना रीडिंग एक अनुभव बताता हूँ कि वेन एवर आई एम कन्फ्रंटेड, जब भी मैं फेस टू फेस आमना सामना करता हूँ ऐसी बुक का जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जिसमें कि बहुत लंबे सेंटेंस है, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि दे आर डिफिकल्ट टू ग्रास्प, I figure out what is the central theme, central thought of this particular page or section of the page that I'm reading, and I quickly figure it out because जब आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए या फिर तुरंत पकड़ लें और उसके बाद उसी को पढ़ेंगे पहले तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं, यू कीप रीडिंग, you hit a blockade, you hit a point where you might not be able to read, understand, but then you move on to the second sentence, and the third, and the fourth, and the fifth. As you progress further, you will grasp, you have an idea of the central theme is all about. Again, it's it's habit, experience, it's effort that you put in when you read a book.
सो दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. स्पीड रीडिंग इसे कहते हैं शायद लोग. स्पीड रीडिंग के और भी टेक्निक्स होते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि ये जो बुक में पेज मैंने पढ़ा है, इसमें जो थीम है वो एक ये थीम कहता है कि जो वेदास में जो बातें लिखी गई हैं, वो वेदास में हिंदुइज्म में जो बात कर रहे हैं, ये इसलिए डिफरेंट है बाकी रिलीजन से कि हिंदुइज्म में जो बातें लिखी गई हैं वो किसी बहुत ही महान साधु संत महात्मा ने लिखी गई हैं, जिनका एक अनुभव है स्पिरिचुअल, जिनका एक आत्मिक अनुभव है, जिन्होंने कुछ अनुभव किया और वो उसे लिखा. और वो कहते हैं कि जो वेदा में लिखा गया, अगर आप उसे प्रैक्टिस करें अपनी ज़िंदगी में, तो आपको भी वो अनुभव होगा. अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी वो अनुभव होगा जो अनुभव उस अ, महात्मा को हुआ, सीयर को हुआ, उस अनुभव को आप भी एक्सपीरियंस करेंगे. ये बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, लेकिन ये 16 आने सच है. इट्स 100% ट्रूथ. व्हेन यू यू नो chant the mantras, or you understand the Vedas from the point of view of which it is written, आपको वही अनुभव होता है. यही इसमें बात की गई है, मोटा मोटा इसमें ये कहा गया है. So we'll move further. The Vedas bring together the different ways in which the religious minded of that age experienced reality and describe the general principle. Okay, यहाँ पढ़ चुके हैं. As the experiences themselves are of a varied character, so the record are many-sided. Vish Yusvato Mukham was suggestive of many interpretation. Anekar Thatam. Okay, it is essential to even religion, every religion, that its heritage should be treated as sacred. A society which puts a halo of sanctity around its tradition gains an inestimable advantage of power and permanence. The Vedic tradition became surrounded with sanctity and so helped to transmit culture and ensure the continuity of civilization. The sacred scriptures make the life of the spirit real, even to those who are incapable of insight. Men in the rough and tumble of life, with their problems and perplexities, sins, and sorrows, have no patience for balanced arguments or sustained meditation. But they want same formula or rule of life which they can accept as valid. Through it, they are inducted into a new way of life. A living tradition influences our inner faculties, humanizes our nature, and lifts us to a higher level. By means of it, every generation is molded in a particular caste, which gives individuality and interest to every cultural type. Even those who wish to discern the truth for themselves require a guide in the early stages. The Hindu attitude to the Vedas is one of trust tempered by criticism. Trust because belief and forms which helped our fathers, are likely to be of use to us also. Criticism because, however valuable the testimony of the past ages may be, it cannot deprive the present age of its right to inquire and sift the evidence. Precious as are the echoes of God's voice in the souls of men of long ago, our regard for them must be tempered by the recognition of the truth that God has never finished the revelation of his wisdom and love. Besides, our interpretation of religious experience must be in conformity with the findings of science. As knowledge grows, our theology develops. Okay, so I'll give you a brief of what it is all about. ये मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, जो सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी का एक पीछे एक हेलो, एक तरीके से जो पीछे भगवान नहीं दिखता प्रकाश, वो पहन लेती है. और वो कहती है कि यही ट्रेडिशन सही है. अ, वो शायद पावर तो पा लेती है, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं होता. वो कह रहे हैं कि सही तरीका ये है कि sacred scripture make the life of the spirit real even to those who are incapable of insight. कि जो स्क्रिप्चर्स होती हैं, जो वेदास होती हैं, वो उनके लिए भी वो पावर, उनकी शक्ति एकदम रियल हो जाती है, जिनके पास सच में कोई गहन अध्ययन नहीं है. तो वो भी उसको समझ सकते हैं, उसको पूरा ना पढ़ें, लेकिन उसको अपनी लाइफ में छोटे छोटे फार्मूला, छोटी छोटी बातों से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. और मेडिटेशन तो वो नहीं कर पाएंगे. एक फ़ॉर्मूला, एक रूल ऑफ लाइफ जो उनको उस वेदा से पता चलता है, जो वो वैलिड समझते हैं, जो उनके समझ में आता है, वो उससे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, जो करंट ज़िंदगी जी रहे हैं. और वो ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल का अपना तरीका होता है समझने का. इसीलिए हिंदू एटीट्यूड वेदास की तरफ से ऐसा है कि जहाँ पर ये बोला गया है कि आप उस वेदा को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट ले, क्योंकि उस वेदास के इस्तेमाल से
बड़े बड़े संत महात्मा भी ने सच्चाई को जाना है। और क्रिटिसिज्म भी करो, क्रिटिसिज्म इसलिए कि क्योंकि ये आपका अनुभव है, तो हो सकता है आपको इसमें डाउट हो, तो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। तो ये बात इसमें कही गई है इस पेज में। We'll move further. As knowledge grows, our theology develops. Only those parts of the tradition which are logically coherent and are to be accepted as superior to the evidence of the senses and not the whole tradition. The Hindu philosophy of religion starts from the returns to an experimental basis. Only this basis is as wide as human nature itself. Other religious systems start with this or that particular experimental datum. Christian theology, for example, takes its stand on the intermediate certitude of Jesus as one of whose absolute authority over conscience is self-certifying, and whose ability and willingness to say save the soul, it is impossible not to trust. Christian theology becomes relevant only for those who share or accept a particular kind of spiritual experience, and these are tempted to dismiss other experiences as illusory and other scriptures as imperfect. Hinduism was not betrayed into this situation on account of its adherence to the fact. The Hindu thinker readily admits other points of view than his own and considers them to be just as worthy of attention. If the whole race of man in every land, of every color, and every stage of culture is the offspring of God, then we must admit that in the vast compass of his providence, all are being trained by his wisdom and supported by his love to reach within the limits of their power and of their powers and knowledge of the supreme. When the Hindu found that different people aimed at and achieved God realization in different ways, he generously recognized them all and justified their place in the course of history. He used the distinctive scriptures of the different groups for their uplift, since they remain the source, almost the only source for the development of their tastes and talents, for the enrichment of their thought and life, for the appeal of their emotions and the inspiration of their efforts. Hinduism is the religion not only of the Vedas but of. Okay. ये मोटा मोटी इस पेज में कह रहे हैं कि जो बाकी रिलीजन है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, तो जो जीसस के बारे में, जो जीसस की अथॉरिटी है और जीसस ने जो कहा है उसको ही सच मान लिया। और और भी किसी प्रकार की किसी क्रिश्चियनिटी में किसी एक अच्छे आदमी के बिलीफ या फिर उसकी विचार या उसके एक्सपीरियंस को नकार दिया गया। मतलब कि उसमें सभी रिलीजन्स में ये देखा गया है कि हम सबके विचार ग्रहण नहीं करते हैं, अलग-अलग लोगों के विचार ग्रहण नहीं करते हैं, बस एक कट्टर एक विचार बन जाता है हमारा कि यही इस रिलीजन का विचार है और वो ही रहेगा। लेकिन हिंदुइज़्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज़्म में अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन ही सेज़ कि हम हिंदुइज़्म में हिंदू थिंकर को सिखाया जाता है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को मानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए और उससे असिमिलेट करना चाहिए उससे अच्छी बातें और उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये मोटा-मोटा इस पेज में क्या कहा गया है। So Hinduism is not only the religion of Vedas, but also the epics and the Puranas. By accepting the significance of the different intuitions of reality and the different scripture of people living in India, guys, I know it's a long page chapter. So what we'll do now, we'll start reading it. I'll try and read it as quickly as possible and finish this chapter, and then I'll get back to you with the brief of what this chapter meant. And in the meanwhile, also might um, मेरे यहाँ पर नोट पैड रखा हुआ है, इनफैक्ट पेन भी रखा हुआ है, so I'll jot down the points also and see if I have something to share with you. It's a good practice. If you read book, please make sure that you have a notepad. Any kind of notepad would do, a notebook would do, and a pen, and write down important point. It helps a lot. It's a way of you can call it note making, which helps you develop this habit of if you're really into reading, uh, you know important knowledge points which you can refer to later when you want to do something. Say for example, in writing, you want to write stuff, or you want to
go for debate, go for a presentation. It really helps if you have this information handy with you. Okay, so now I'll do. I'll just start reading this chapter and not get into anything else, but complete this chapter with focus. So I'll not be talking. So you'll be seeing me just reading. कोई नहीं है guys, man, come on. I want people to participate in this live stream. ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? All right, I'll go into my mobile and I'll try and invite people over WhatsApp. Alrighty.
The electricity is gone, but we'll keep reading. This is a book marathon.
All right, so the first chapter is finished. I'll just give you a brief of what it's all about. इसमें हमने पेज 9 तक पढ़ लिया था. इनफैक्ट पेज 9 नहीं, पेज 7 तक पढ़ लिया था. एक आइडिया दे दिया था हमने कि हिंदू फिलॉसफी बिलीव करती है एक्सपीरियंस पे, गॉड के एक्सपीरियंस पे, मतलब एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं. तो उन्होंने कहा कि पुरानाज में भी यही मिलेगा आपको, स्टोरीज मिलेंगी, इमेजिनेटिव लिटरेचर मिलेगा. बट it was all accommodated in Hinduism or Hindu view of life. And after that, the writer S. Radhakrishnan has talked about कि traditions जो भी हमारी हैं अगर वो grow नहीं करती हैं तो it means that its followers have become spiritually dead, और उसके followers उस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए वो tradition बढ़ नहीं रही है. So he's giving various examples of movement that have come out of Hindu way of life, जैसे कि वैदिक आर्यंस नेटिव ट्राइब से कांटेक्ट में आए तो यू नो फर्स्ट प्रोग्रेस हुआ. फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो द मूवमेंट व्हेन आर्यंस मूव टू गैंजेटिक प्लेन्स. जब आर्यंस इन दिस रिवर एरिया से जा हटकर गैंजेटिक प्लेन्स पर आ गए, मतलब प्लेन एरिया में आ गए, तब जैनिज्म और बुद्धिज्म बढ़े. और रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ रामानंदा, चैतन्य, कबीर, नानक, उसमें स्टिमुलस है इस्लाम का. मतलब उस टाइम पे वो जब इस्लामिक ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा फैल रही थी, इस्लामिक बहुत ज़्यादा फैल रहा था इंडिया में. और ब्रह्मो समाज और आर्य समाज तब फैला जब हमारे समय ब्रिटिशर्स आ गए थे और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब हमने वेस्ट की तरफ से प्रभाव झेला तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज उभर कर आए. तो ये कहता है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट कितनी बार भी चेंजेस हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन एक कॉमन बैकग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड जो रहा वो विच वाज वेदांता. दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नो मैटर व्हाट हैपेंड, वेदांता रिमेन्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, द कैरिंग फोर्स in this whole thing. And then it says the three pratishtans or divisions of the Vedanta, the Upanishads, the Brahma Sutra, and Bhagavad Gita, answer roughly to the three stages of faith, knowledge, and discipline. तो ये बताते हैं कि ये प्रतिष्ठान और डिवीजन कह लो वेदांता की हैं, उपनिषद्स, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता. और फेथ, नॉलेज और डिसिप्लिन की ये बात करती हैं. भगवत गीता बात करती है एक योग शास्त्र की, जिससे कि हम रिलीजियस लाइफ अपनाएं. ब्रह्मसूत्र लॉजिकल टर्म्स में बात करती है उपनिषद के कंक्लूजन की, और उपनिषदा बात करती हैं एक्सपीरियंस उन महात्माओं की जिसमें कि डिसिप्लिन था उन चीज़ों में, क्या था उसमें, मतलब बेसिकली उन महात्माओं की बातों में क्या बात थी, क्या अनुभव थे, उनको बात करती है उपनिषद. और ब्रह्मसूत्र उसका कंक्लूजन देती है आपको लॉजिकल वे में उपनिषद का. और भगवत गीता एक योग शास्त्र है जो कि तरीका बताता है किस तरीके से हम एक रिलीजियस लाइफ जिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये स्टैंडर्ड बनाते हैं हिंदू रिलीजन का, तीनों चीज़ मिलकर. फिर इट टॉक्स अबाउट फैक्ट दैट इज रिलीजन एन एक्सपीरियंस. इफ रिलीजन इज एन एक्सपीरियंस, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इफ रिलीजन इज एक्सपीरियंस द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज इट दैट इज एक्सपीरियंस्ड. मतलब अगर रिलीजन एक एक्सपीरियंस है तो वो क्या है जो वो अनुभव हम करते हैं. तो ये बात इसमें क्लियरली मतलब डिटेल में बताई गई है कि क्या हम सोचते हैं, कैसा हम अनुभव करते हैं. बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन जो मोटा मोटा इसमें कहा गया है वो ये कि हिंदू कभी डाउट नहीं करता रियलिटी ऑफ वन सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट. और कुछ भी बातें कहें कोई भी, अगर नेचर ऑफ गॉड डिफाइन करने के लिए बोला गया तो जो उपनिषद में जो एक्सपीरियंस रहे साधु महात्मा के, वो कहते हैं कि जो गॉड है वो एब्सोल्यूट है और वो साइलेंट है, वो शांत है. तो
अगर आपको परमात्मा को या ईश्वर को या गॉड को अनुभव करना है एज पर उपनिषद, जो कि यू नो साधु संत के एक्सपीरियंस थे, वो आपकी बोली से या फिर आप कुछ विचारों से आप अनुभव नहीं कर सकते। एंड दे से कि वो बोलते हैं ऐसा कि देयर द आइज गोज नॉट, वहाँ आंखें नहीं जाती, स्पीच गोज नॉट, बातें आवाज़ नहीं जाती, नॉर माइंड नहीं दिमाग, एंड वी नो नॉट, वी अंडरस्टैंड नॉट हाउ वन वुड टीच इट। तो जब हम उसे समझ ही नहीं सकते तो हम उसे क्या समझाएं। समझ के परे है ईश्वर, ये बात की गई है, उनका एक्सपीरियंस। बट द ह्यूमन माइंड फाइंड्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिजाइन हिटसेल्फ इनटू टू एब्सोल्यूट साइलेंस और नेगेटिव डिस्क्रिप्शंस। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा है कि वो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए समझना जो चीज़ जिसमें बिल्कुल शांति हो, एब्सोल्यूट साइलेंस की बात करता हो, जो कि बिल्कुल गहन शांति की बात करता हो, वही ईश्वर है। ये चीज़ एक इंसानी दिमाग की समझ के बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि वो सीमित है, वो सीमित चीज़ों की बात करता है कि वो मेजर करता है हर चीज़ को, नापता है हर चीज़ को, और उसके बिना इनफैक्ट ये बड़ा स्टेटमेंट भी है जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, कॉमन पॉपुलर स्टेटमेंट है, दैट विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी अचीव्ड। राइट, यू हैव टू मेजर योर प्रोग्रेस, या आपने कल कितना पढ़ा तो उसमें लिखो कितना पढ़ लिया, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी आपका ये बढ़ेगा। ऑल दीज लॉजिक्स, दिस इज बियॉन्ड गॉड। दैट्स व्हाट इट सेज इन दिस बुक, दैट संत महात्मा बताते थे उपनिषद्स में कि भगवान को जानना है, इट्स बियॉन्ड माइंड। द सीयर्स ऑफ द उपनिषद्स वर impressed by the unreality of the world, its fleeting and transitory character, and sought for the infinite real, and sat which would not roll away like the mist of Maya illusion। तो कहते हैं कि जो योगीज थे उस समय के, वो बिलीव करते थे कि माया इल्यूजन जो कि ख़त्म हो जाएगी, आज है कल नहीं है, उसमें बिलीव नहीं करते थे, बिलीव करते थे उस एब्सोल्यूट ट्रूथ में जो कि आपको मिलेगा जब आप उस रियल से जुड़ेंगे। तो इसके बारे में ही स्ट्रेस, देन ही सेड दैट व्हाट इज इट दैट्स डिफरेंस इंडियन रिलीजन या फिर हिंदू वे ऑफ लुकिंग थिंग्स एंड व्हाट अदर पीपल लुक एट। तो ये कहता है कि हिंदू थॉट बिलीव्स इन द एवोल्यूशन ऑफ आवर नॉलेज ऑफ गॉड। और वो कहता है कि हिंदू जो रिलीजन है वो बिलीव करता है कि इस तरीके का नॉलेज ऑफ गॉड में जो कि इवॉल्व हो रहा है। मतलब वो ये मानता है कि हर परमात्मा अपने को अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो उसमें बहुत सारी थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मैन ऑफ एक्शन फाइंड्स इट हिज गॉड इन फायर, कि जो आदमी हर 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 किसी को अपने हिंदुइज्म में अपने गॉड को वर्शिप करने की छूट है, कि जो एक्शन में बिलीव करता है वो शायद अग्नि को वर्शिप करता है, फायर को वर्शिप करता है। जो फीलिंग, जिसके अंदर भावना ज़्यादा है जिस इंसान के अंदर, वो दिल के भगवान को वर्शिप करता है, पूजा करता है। जो कमज़ोर है वो किसी मूर्ति की पूजा करता है। जो बिल्कुल स्ट्रांग है अपने स्पिरिट में, अपनी आत्मा में, वो भगवान को हर जगह देखता है। एंड द सियर सी द सुप्रीम, और जो साधु महात्मा है वो सुप्रीम, मतलब द ऑल गॉड ऑल माइटी को अपने अंदर देखता है, बाहर की फोटोज़ में नहीं, पिक्चर्स में नहीं, बल्कि अपने अंदर भगवान को देखता है। इसमें ये कहा गया है, एंड इवेंचुअली ही सेज दैट द होल हिंदू वे ऑफ लुकिंग एट गॉड एंड हिज एक्सपीरियंस हैज़ टू रियली मेक become different, and टेम्पल श्राइन्स और सेंचुरीज यहाँ पे पूरी इंडिया कवर हो रखी है। ये सिर्फ प्रेयर करने की जगह नहीं है, बट एक जगह है जहाँ पर हम सीखें, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि स्पिरिचुअल डायरेक्शन दे हिंदूज़ को इस विचार में। एस राधा कृष्णन बात करते हैं, और दिस इज द होल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, रिलीजियस एक्सपीरियंस, इट्स नेचर एंड कंटेंट। तो इसकी बात की गई है इस चैप्टर में। वी हैव कंप्लीटेड 18 पेजेस, एंड हमने 1.5 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं इस लाइव स्ट्रीम के। 1.5 घंटे में 18 पेजेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट दिस बुक इज़। And I'll not go in detail of second chapter, which is conflict of religions, the Hindu attitude, and ये 18 से start होता है pages से, and it finishes at 40, page 40, so it's around
21 पेज का एक चैप्टर है. And I'll read it and I'll give it to you what it's all about. Then we'll move to Hindu Dharma. और ये है from ये 65 पेज पे ख़त्म होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25 पेजेस का है. एंड देन वील मूव टू फोर्थ चैप्टर हिंदू धर्मा 2, जो कि आई बिलीव विल बी द एंड ऑफ दिस बुक, राइट. ये सही बात है. 95, तो 65 से 95 30 पेजेस का सबसे बड़ा चैप्टर यही है approximately, right. So this is all that we need to read: first, second, third, and fourth. And once we do that, this book is finished. So if you are still not live, I know that it's late in the night. It's almost 11:45, almost close to midnight. मुझे पता है लोग नहीं हैं अभी. Guys, if you are there, if you can, if you want to, please watch, please go live and try and watch this video. I'm there with you guys. I hope some people are watching, some people want to watch. Guys, okay. All right. So we are okay. All right, guys. So I really want to finish this chapter. This is the challenge. This is the difficulty when you're reading a book. How to develop this focus, this concentration that you need to be able to read one book after the other. I've finished 18 pages in this 1.5 hour. I have explained the chapters to you, chapter to you. I'm sorry, the paragraphs to you, the lines to you, just so that you get encouraged to read these books. ये बुक आप पढ़ें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ. कुछ डिफिकल्टी आएगी पढ़ने में, लेकिन क्या होता है कि यू हैव टू स्किप दैट पार्ट, जस्ट एज आई टोल्ड यू इन दिस लाइव स्ट्रीम. पहले आधे पौने घंटे पहले मैंने ये बात डिस्कस करी थी. यू कैन डू दैट टू. Okay, so what we'll do here, just to give you a little taste of some other book, हम इस book को continue करेंगे right away. Okay, but in the meanwhile, I'll take a break from this book. We are on chapter 2 on page 19. We'll start again very soon on this chapter. I'm not giving up on it. And we'll move to another book, जो कि है द एल्मनक ऑफ नवल रविकांत. और ये बुक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है. इस बुक का थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये क्या बोल रही है. ऑलराइट, सो इट सेज, लेट मी रीड द व्हाट इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट. ओके, तो इसमें क्या बता रखा है. ऑलराइट, गेटिंग रिच इज नॉट जस्ट अबाउट लक,
happiness is just not just a trait we are born with. These aspirations may seem out of reach, but building wealth and being happy are skills we can learn. So, what are these skills? How do we learn them? What are the principles that should guide our efforts? What does progress really look like? Naval Ravikant is an entrepreneur, philosopher, and investor who has captivated the world with his principle of building wealth and creating long term happiness. The Almanac of Naval Ravikant is a collection of Naval's wisdom and experience from the last 10 years, shared as a curation of his most insightful interviews and poignant reflection. This isn't a how-to book or a step-by-step gimmick. Instead, through Naval's own words, you learn how to walk your own unique path toward a happier, wealthier life. Okay, so एक book क्या बात करती है happier, wealthier, and good life. So this is what this book is touching on. So let's start reading it. All right. All right, so right now I'm skipping, something important notes on this book. Let me just read it first. Important notes बोला है तो कुछ important हो सकता है. I built the novel maniac entirely out of transcript, tweets, and talks novel has shared. Every attempt is made to present the novel in his own words. However, there are a few important points. Transcripts have been edited for clarity and brevity. All sources are primary. I can't be 100% certain of every source authenticity. Concepts interpretation changes over time, medium and context. Please verify phrasing with a primary source before citing novel from its text. Please interpret generously. Understand the original intent may be different than your interpretation at different time, medium, format, and context. In the process of creating this book, I may have mistakenly recontextualized, misinterpreted. Okay, tweets are formatted like pull quotes, सब कुछ मतलब वही बात ये कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली मैंने कंपाइलेशन करी है तो कुछ बातें सही हो सकती कुछ बातें गलत हो सकती हैं. Hmm. This is a choose your own adventure book. Jump to anything that interests you and skip anything that doesn't. That is wonderful. Non-narrative मतलब इसमें कोई कहीं से भी पढ़ सकते हो आप मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. If you find a word or concept you're not familiar with, look it up or read on to find more context. Some referenced ideas are expanded upon later in the book. Okay. All right. So एक फॉरवर्ड है टिम फेरिस बहुत ही एक बुक है टूल ऑफ द टाइटन्स आई थिंक उन्होंने लिखी है. उसके राइटर हैं तो उन्होंने एक फॉरवर्ड लिखा है इस बुक के लिए. डियर रीडर, इट फील्स स्ट्रेंज फॉर मी टू राइट दीज वर्ड्स एज आई कमिटेड मेनी ईयर्स अगो टू नेवर राइट फॉरवर्ड्स. I'm making a rare exception in this case for three reasons. First, a free version of this book is being offered to the world in a digital Kindle ebook format with no strings attached. Second, I've known Naval for more than a decade and have long wanted someone to compile this book. Third, I'm increasing the likelihood of Naval's next child being named Tim. I'll settle for Timbo if he prefers. Naval is one of the smartest person I've ever met, and he's also one of the most courageous. Not in the run into the fire without thinking twice sense, but in the think twice and then tell everyone they're focusing on the wrong fire sense. He's really part of any consensus, and the uniqueness of his lifestyle, family dynamics, and startup successes is a reflection of conscious choices he's made to do things differently. He can be as blunt as a foot to the face, but that's part of what I love and respect about him. Okay.
All right, so एक timeline है where it talks about Naval Ravikant's life, जिन पे ये book है. Born in Delhi, India, 1974. 85 age I moved from Delhi to Queens. 89 age 14 attended high school. Okay, all of that. Blah blah blah. Age 34 invested in Uber. All right. I grew up in a single parent household with my mom working, going to school, and raising my brother and me as latchkey kids. We were very self sufficient from very early age. There was a lot of hardship, but everyone goes through hardships. It did help me in a number of ways. Okay. And we were poor immigrants. My dad came to the US. He was a pharmacist in India, but his degree wasn't accepted here, so he worked in a hardware store. Not a great upbringing. You know, my family split up. My mother uniquely provided against a background of hardship, unconditional and unfailing love. If you have nothing in your life, but you have at least one person that loves you unconditionally, it will do wonders for your self esteem. We were in a part of New York City that isn't very safe. Basically, the library was my after school center. After I came back from school, I would just go straight to the library and hang out until they closed. Then I would come home. That was my daily routine. We moved to the US when we were very young. I didn't have many friends, so I wasn't very confident. I spent a lot of time reading. My only real friends were books. Books make for great friends because the best thinkers of the last few thousand years tell you the nuggets of wisdom. My first job was with an illegal catering company in the back of a van, delivering Indian food when I was 15. Even when I was younger, I had a paper route and I washed dishes. Paper route. I had a and I washed dishes in the cafeteria. ये अपनी बारे में बता रहे हैं क्या है ज़िंदगी जी. You can pretty much make out what it's all about if you can hear what I'm saying. I was totally unknown kid in New York City from nothing family and immigrants trying to survive situation. Then I passed the test to get into high school. That saved my life because once I had that brand, I got into an Ivy League college, which led me into tech. Is one of those intelligence lost lottery situation where you can break in with instant validation. You go from being a blue collar to white collar in one move. At Dartmouth, I studied economics and computer science. There was a time when I thought I was going to be a PhD in economics. Today, I'm an investor. Personally, it's about 200 companies, in about 200 companies. Advisor to a bunch. I'm on a bunch of boards. I'm also a small partner in a cryptocurrency fund. Okay, I'm always cooking up something new. I always have a bunch of side projects. All that, of course, in addition to being the founder and chairman of Angel List. Was born poor and miserable, and now I'm pretty well off and I'm very happy I worked at those. I learned a few things and some principles. I try to lay them out in a timeless manner where you can figure it out for yourself. Because at the end of the day, I can't quite teach anything, I can only inspire you, maybe give you a few hooks so you can remember. So this is the story of this guy, Naval Ravikant, who was born in an immigrant family. His parents migrated from India to US, and he's succeeded in life because he got admitted to a very prestigious high school, and from there he went into Ivy League college, which kind of built his career, and he was able to succeed in life, and then he got into tech, and then he was really successful. So this is what he shared. All right, so he's invested in a lot of important companies, Uber, Twitter. All these two companies have done really well. Everybody knows about them. Okay, so the first chapter, part one, wealth. I building wealth. Making money is not a thing you do; it's a skill you learn. तो पहला ही सेंटेंस ये कहता है कि मेकिंग मनी इज एक चीज़ नहीं है कि जो आप कर रहे हो, बट स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है. All right, now starts with understand how wealth is created. Guys, I really want you to join this live stream. If you are still not, you know,
clued in and you're still not aware what it is all about. I'm reading four books today. I've started one book already, and I've finished one chapter, and we have just taken a break from that book, and we'll move on to the next three chapters, which will finish this small book. But uska text or language, it's not that easy. So, same time. In the meanwhile, I moved to the second book, The Almanac of Naval Ravikant, and we are reading the first chapter. I'm sorry. Understand how wealth is created. I like to think that if I lost all my money and you dropped me on a random street in any English speaking country within 5 or 10 years, I'd be wealthy again because it's just a set I've developed that anyone can develop. It's not really about hard work. You can work in a restaurant 80 hours a week, you're not going to be rich. Getting rich is about knowing what to do, who to do it with, and when to do it. It is much more about understanding than purely hard work. Yes, hard work matters and you can't skimp on it, but it has to be directed in the right way. If you don't know yet what should work on, the most important thing is to figure out. You should not grind at a lot of hard work until you figure out what you should be working on. I came up with the principles in my tweet storm below for myself when I was really young, around 13 or 14. I've been carrying them in my head for 30 years and I've been living them over time, sadly or fortunately. The thing I got really good at was looking at businesses and figuring out the point of maximum leverage to actually create wealth and capture some of that created wealth. That is exactly what I did my famous tweet storm about. Of course, every one of these tweets can be extrapolated into an hour's worth of conversation. Tweetstorm below is a good starting point. Tweetstorm tries to be information dense, very concise, high impact, and timeless. It is all the information and principles. So if you absorb these and you work hard over 10 years, you will get what you want. So this page may he is stressed on the fact that earning money, making wealth, being wealthy, it is not about hard work. It's not about it is a skill set that you need to learn. It is getting rich, he says, is about knowing what to do, who to do it with, and when to do it. That's something that you need to learn. Getting rich is knowing what to do, who to do it with, and when to do it. And he says that you can drop me, मेरा सारा पैसा ले लो, मेरे पास पैसा ख़त्म कर दो और मुझे किसी दूसरे देश में, इंग्लिश स्पीकिंग देश में आप छोड़ दो, मैं 8-10 साल में उतना ही अमीर बन जाऊंगा जितना मैं अब हूँ. So he's saying that I have a skill set through which I can make money again, the same amount of money that I've made till now. And if you empty my bank and I have no money left and leave me in some other country, I can still make the same amount of money in 10 years. जो कि एक amazing बात है. So he's saying that's not about hard work. Then he says how to get rich. And then he breaks down in this page what it is. How to get rich without getting lucky. Seek wealth, not money or status. Wealth is having assets that earn you while you sleep. Money is how we transform time and wealth. Status is your place in the social hierarchy. Understand ethical wealth creation is possible. If you secretly despise wealth, it will elude you. ये कहते हैं कि पैसा कमाओ, वेल्थ और मनी डिफरेंट चीज़ है. पैसा होता है जब आप कितना काम करते हो उसका पैसा मिलता है, लेकिन वेल्थ वो एसेट्स बनाना जिसमें कि आप पैसा कमा रहे हो, जब आप सो भी रहे हो तब भी पैसा कमा रहे हो. और मनी इज़, हम जब टाइम तो देते हैं और पैसा लेते हैं, वो पैसा है, वो मनी है. और स्टेटस मतलब होता है कि सोशल हायरार्की. तो स्टेटस से क्या करना, आपको पैसा देखना है, मनी जिसमें आप बढ़े वो अपने आप. और ये समझो कि एथिकल तरीके से और सही तरीके से पैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर आप पैसे को पसंद ही नहीं करते, अच्छा ही नहीं मानते हो, तो वो आपके पास नहीं आएगा. इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम्स. They gain status by attacking people playing wealth creation games. They gain status by attacking people playing wealth creation games. Just ignore people who just trying to show off, because वो स्टेटस सब कमाते हैं जब वो अटैक करते हैं उन लोगों को जो कि एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं. मे बी दिस इज द मीनिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एज आई टॉक टू यू.
You're not going to get rich renting out your time. You must own equity, a piece of a business to gain your financial freedom. मतलब कह रहे हैं कि रिच आप कभी नहीं बन सकते कि आप अपना समय देकर कोई चीज़ करते रहो पैसा कमा लोगे। तुम्हें इक्विटी कमानी पड़ेगी, बिजनेस का एक पीस लेना पड़ेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक चीज़ है जो कि एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज। इट सेज दैट आप रिच तब बनोगे जब सोसाइटी को वो चीज़ दोगे जो कि उसको चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं कैसे चाहिए वो, और वो आप स्केल पे बहुत सारे लोगों को दे सकते हो। पिक एन इंडस्ट्री वेयर यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। पिक एन इंडस्ट्री से एक इंडस्ट्री चुनिए और वहाँ पर मेक श्योर दैट यू आर इन दैट इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म with long term people who are in it for long term. The internet has massively broadened the possible spaces of careers. Most people haven't figured this out yet. It says that इंटरनेट ने बहुत ही ब्रॉडन कर दिया है लोगों के करियर्स के स्पेसेस को, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लोग अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। प्ले IT related games. All the returns in life, whether in wealth, relationship, or knowledge, come from compound interest. ये बहुत स्मार्ट पॉइंट मेंशन किया है। ही सेज कि कीप यू नो कंपाउंडिंग योर लाइफ। जैसे आज आपने जोड़ा, उसका आपको इंटरेस्ट मिला, फिर वो दूसरा जोड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना, आप धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करते हो, तो आपको वो आपके हर चीज़ में लाइफ में देखना चाहिए शुरू करना चाहिए। वेल्थ, रिलेशनशिप या नॉलेज, इन सब में you have to make sure that you have this iterated way of looking at it, which where it grows, compounds every day or every month, every year. Pick business partners with high intelligence, energy, and above all integrity. You should have business partners who are very intelligent, who are energetic, and above all they are fair, वो बेमानी नहीं करते हैं। Don't partner with cynics and pessimists. They believe are self-fulfilling, जो कि नेगेटिव साइड्स ढूंढते हैं और जो कि पागल से होते हैं, उनसे आप बिजनेस मत करिए। लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। इफ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। Learn how to sell things, learn how to build things, and if you do that, if you're able to do that, you will be unstoppable. Arm yourself with specific knowledge, accountability, and leverage. Arm yourself with knowledge, accountability, and leverage. मतलब कितना इंपॉर्टेंट शब्द है ये, सेंटेंस है ये, कि आप अपने पास नॉलेज रखिए उस चीज़ की, अकाउंटेबल रहिए कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसकी आप जिम्मेदारी लें पूरी, एंड leverage again is a very important word, which means that you have this capacity to you know um, gain control or gain uh, prominence in whatever you're doing. एक leverage मिले आपको, मतलब एक अथॉरिटी मिले उस काम में। स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज यू कैन नॉट बी ट्रेन फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। इट सेज दैट स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज यू कैन नॉट बी ट्रेन फॉर। अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिक नॉलेज आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको खुद ही लेनी पड़ती है। ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ। ये व्हाट इज ट्राइंग टू से, होपफुली आई विल फिगर इट आउट लेटर ऑन। अगर सोसाइटी आपको ट्रेन, सेकंड पार्ट समझ में आता है, वेट सेज कि अगर सोसाइटी आपको ट्रेन कर सकती है किसी काम में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम है जो कि सब कर सकते हैं और वो ट्रेनेबल है, तो आपको रिप्लेस करके किसी और को रख देंगे उस काम में। ऐसा काम होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप की पकड़ हो और कोई it's not easy for everyone to do it. Specific knowledge is found by pursuing a genuine curiosity and passion rather than whatever is hot right now. This is really important. This is where a lot of us fail, and I think I also understand. In the hearts of hearts, जो चीज़ आप अपनी genuine curiosity और passion से, what is the difference between curiosity and passion? I mean, things people really fall for. कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई चीज़ ट्रेंड में है, हॉट है एकदम, जैसे कि रील्स आई हैं इस टाइम पर, शॉर्ट्स हैं, या फिर कुछ ऐसा वीडियो का ट्रेंड जो कि इस समय हॉट है। मैं अपने एग्जांपल से दे सकता हूँ आपको, और उसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं, दे जस्ट मैड अबाउट इट। You should do it. I'm sure cannot ignore what is selling right now, but what it is that your heart desires,
If your heart desires, like my heart desires, that I can do great when I am talking about books, talking about reading. I want to take it to another level. I want people to be interested in reading. My idea is to motivate people to read, to gain that knowledge and upper hand in their day-to-day life, because every successful person reads their books on motivation, books about non-fiction, books about history, books about personality development, books about business. All of that I want to read and give it out to you and tell all of you about it. Even if you know it, I want to share that knowledge with you. Maybe, I'm pretty sure it'll benefit you, and that's why I'm passionate about it. And I'll keep, if I'm passionate about it, if I'm curious about knowing those things, मैं उसको बार बार एनालाइज करता रहूँगा. And it is fun for me because I like it, and I will not give up because I know in my heart that this is what I want. तो इसमें ये क्या आ गया है मोटा मोटी, जो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी होना और पैशन होना बहुत ज़रूरी है. तभी स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है, क्योंकि यू विल जस्ट बी एट इट, करेक्टिंग योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे, एवरी सेकेंड. Building specific knowledge will feel like play to you, but will look like works to others. अगर नॉलेज जो बिल्ड करनी है आपके लिए तो वो आसान होगी क्योंकि आपका पैशन है वो, और प्ले खेल की तरह होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए काम होगा वो. When specific knowledge is taught, it's through apprenticeships, not schools. मतलब स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है तो वो किसी को आपको एक तरीके से सिखाना पड़ता है, उस काम में आपको अनुभव कराना पड़ता है. और वो स्कूल्स में नहीं सिखा सकते, क्योंकि स्कूल्स में तो सिर्फ एक रट्टा ही मारते हैं ना आप. जो लिखा होता है उसको समझते हैं, आपको कोई अनुभव नहीं होता उसमें. स्पेसिफिक नॉलेज ऑफन हाईली टेक्निकल और क्रिएटिव. इट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड और ऑटोमेटेड. दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि ये स्पेसिफिक नॉलेज है किसी भी चीज़ की, वो दे नहीं सकते कि भैया तू कर दे, या उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि एक प्रोसेस सेट सिस्टम सेट कर दें कि ये अब ऐसा होता है तो अगर ये चला जाएगा तो कल ऐसे होगा. ये स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ही टेक्निकल और क्रिएटिव होती है ज़्यादातर, जो कि सब नहीं कर सकते इसीलिए, और ऑटोमेट नहीं हो सकता वो, दैट्स व्हाट इट इज़. Embrace accountability and take business risks under your own name. Society will reward you with responsibility, equity, and leverage. Again, it says कि अपनाओ अकाउंटेबिलिटी को, किसी भी चीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको अपना लो, और बिजनेस रिस्क लो अपने नाम पर, और सोसाइटी आपको इनाम देगी, रिवॉर्ड करेगी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद एक्विटी, विद लेवरेज. अब पावर देगी आपको उसको काम करने के लिए, एक भरोसा देगी आपको, उसमें एक पार्ट एक हिस्सा भी देगी, एक्विटी मतलब वही कि आपके पास उसे शेयर होगा उसका काम का. गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ. आर्किमिडीज जिनका हमने बारे में साइंस में पढ़ा, उनका लॉ यूरेका है फाउंडेड, उन्होंने कहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल. एंड ही सेज दैट कि आर्किमिडीज ने कहा है कि मुझे एक लिवर दीजिए बड़ा सा, और एक जगह दीजिए खड़े होने की, मैं पूरे दुनिया को घुमा दूंगा. So that's how he thought. Fortunes require leverage. Business leverage comes from capital, people, and products with no marginal cost of replication. कि fortune business leverage comes from capital, people, products with no managerial marginal cost of replication. Go to media. ये मैं बाद में बताऊंगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आया. Capital means money. To raise money, apply your specific knowledge with accountability, ensure resulting good judgment. All right, so pretty long, man. बहुत लंबा इन्होंने ये ट्वीट्स जो करी हैं उसका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. एंड इट्स गोइंग ऑन. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एडवाइस है जो ये दे रहे हैं बिल्डिंग वेल्थ तक. एंड वेयर डज इट एंड? आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी क्यूरियस हियर. Though we'll read the book, man. This book is interesting. Building wealth. All right. All right. Okay. All right. So building wealth is 90-page long. Okay.
Alright, so we were here. Guys, मुझे जानना है मतलब 2 घंटे हो गए हैं and I really want to know. I don't know. I'm figuring out this live stream. I'm trying to understand how to, get people going. I want you to participate. Please come on the stream, and if you are there, uh, you know, um, please come in great numbers. Yeah, come on. Watch this video live. I don't know if लोगों को ये interesting लग रहा है नहीं लग रहा है. I'm not sure, because unless your feedback comes, I won't be able to figure it out, and I want to. Hoo, hoo, hoo. All right. So we are on page 34. We are reading the Almanac of Naval Ravikant. This is the second book that I'm reading right now. It's 2 hours since we started this live stream. We read this book first, The Hindu Way of View of Life, और इसमें अभी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है. इट्स अ वेरी intellectual way of putting what religion, Hindu religion, is all about. And S. Radhakrishnan का विचार इसमें गया है बताने में कि what it is all about. We have read the whole first chapter. मैंने आपको समझाया इस live stream में, and we'll finish the second, third, and fourth chapter as well. We've taken a break from this book, and we have gotten into this book, Almanac of Ravikant, और हमने बात कर रहे हैं कि how he understands, wealth creation. So here he's talking about wealth creation. He's giving us in, simple two liners, 1 2 3 4 ऐसे, और बता रहे हैं कि क्या तरीका है. सॉरी, अपोलोजाइज. क्या तरीका है कि हम वेल्थ क्रिएशन कर सकें, which is different from making money, because money is all about giving your time and making money. But you have to make wealth. For making wealth, you need specific knowledge, and that's what he's talking about. Labor means people working for you. It is the oldest and the most fought over form of leverage. Labor leverage will impress your parents, but don't waste your life chasing it. कि आप लेबर की तरह काम करें या फिर पीपल लोग आपके लिए काम करें, ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्क है. एंड लेबर लेवरेज शायद आपके पेरेंट्स को पसंद आए, लेकिन अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिए इसको, इसके पीछे भागने में. कैपिटल एंड लेबर आर permission leverages. Everyone is chasing capital, but someone has to give it to you. Everyone is trying to lead, but someone has to follow you. ये कह रहे हैं कि कैपिटल और लेबर एक तरीके से परमिशन लेवरेज हैं. दिस इज अ टर्म आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई विल फिगर इट आउट.
लेकिन सभी ये लास्ट सेकंड सेंटेंस समझ में आता है, सेकंड एंड थर्ड, सभी को कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, बस किसी को तो आपको देना पड़ेगा, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू लीड, तो किसी को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा. So that's what he's stressing on. Capital means money. To raise money, apply your specific knowledge with accountability and show resulting good judgment. Okay. Code and media are permissionless leverage. They are the leverage behind the newly rich. You can create software and media that works for you while you sleep. Now he's stressing on the fact that yeah, the code means, according to what I've understood, क्योंकि ये टेक है, तो इट्स अबाउट कोडिंग अ सॉफ्टवेयर, या और मीडिया मतलब यूट्यूब, सोशल मीडिया, दीज आर परमिशन लेस लेवरेज, मतलब इसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई आदमी की ज़रूरत नहीं, इट विल वर्क फॉर यू, इट विल गिव यू बेनिफिट. और ये लेवरेज ऐसी लेवरेजेस हैं, ऐसी बेनिफिट्स हैं. देखो लेवरेज का मतलब मैं आप लोग को पढ़ के ही बता देता हूँ गूगल से, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग. ऑलराइट, so that it becomes easy for you guys. All right, so leverage. The exertion of force by means of a lever. ये तो एक टेक्निकल हो गया एकदम से, आर्किमिडीज वाला. If you have leverage, you hold advantage in a situation. एक stronger position, एक advantage लेना, उसे leverage कहते हैं. ठीक है? An army of robots is freely available. It just packed its data centers for heat and space efficiency. Use it. मतलब ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक आर्मी ऑफ रोबोट्स ही हैं जो कि हर जगह अवेलेबल है, वो से पैक्ड है, उसमें डेटा सेंटर्स हैं, आराम से चलते हैं, उसको यूज़ करिए, वो लेबर है अब आपके लिए. और इसी तरीके से नए रिच लोग आज यही कर रहे हैं. यू कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड मीडिया दैट वर्क्स फॉर यू व्हाइल यू स्लीप. तो सॉफ्टवेयर बनाइए जो आपके लिए काम करे जब आप सो भी रहे हो. इफ़ यू कांट कोड, राइट बुक्स एंड ब्लॉग्स, रिकॉर्ड वीडियोस एंड पॉडकास्ट्स. अगर कोड नहीं कर सकते तो बुक लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, रिकॉर्ड करिए वीडियोस और पॉडकास्ट पे जाइए. लेवरेज इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर जजमेंट. और लेवरेज क्या है? एक फोर्स मल्टीप्लायर है आपके जजमेंट के लिए. और लेवरेज की एडवांटेज एक तरीके से तब बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जब आपका जजमेंट सही होगा. फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर जजमेंट. हाँ, मतलब जजमेंट आपके वो लेवरेज आपको वो डबल ट्रिपल रिटर्न देगा इस तरीके से. एंड जजमेंट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस बट कैन बी बिल्ड फास्टर बाय लर्निंग फाउंडेशनल स्किल्स. और किसी भी चीज़ को जज करना कि वो सही है गलत है, वो आप एक्सपीरियंस के साथ के अलावा फाउंडेशनल स्किल से भी सीख सकते हो. उसके बारे में आगे कहते हैं वो, देर इज़ नो स्किल कॉल्ड बिजनेस, अवॉइड बिजनेस मैगजीन्स एंड बिजनेस क्लासेस. कहते हैं कि स्किल नहीं है कोई बिजनेस सीखने की, तो ये बिजनेस मैगजीन, बिजनेस क्लासेस, इनसे कुछ नहीं होने वाला. Study microeconomics, game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics and computers. अगर आप ये सब पढ़ लेंगे तो ही आप इन सब को सीख जाएंगे. According to the writer, reading is faster than listening, doing is faster than watching. रीडिंग समझ सुनने से अच्छा तो रीड करो, वो जल्दी 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 हो जाएगा. और डूइंग करना ज़्यादा फास्टर है देखने के बजाय. You should be too busy to do coffee while still keeping an uncluttered calendar. Okay, we'll skip it. Set and enforce an aspirational personal hourly rate. If fixing a problem will save less than your hourly rate, ignore it. If outsourcing a task will cost less than your hourly rate, outsource it. वे कह रहे हैं कि एक आवर्ली रेट फिक्स कर दो अपने काम का, कि अगर आप किसी अपना काम जो कर रहे हो, अगर उस काम को आप किसी को दे सकते हो, फॉर एग्जांपल, और आप अपने प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हो तो उसको दे दो. अगर आप उससे पैसा, उसमें को लॉस नहीं है और आपको नुकसान नहीं हो रहा, वो आवर्ली रेट आपका मेंटेन्ड है. टेक्निकल है ये. और अगर आप प्रॉब्लम किसी को फिक्स कर रहे हो और उसमें आपको कम पैसा बचता है आपके आवर्ली रेट से, तो उसे मत करो, राइट. और जहाँ पर आपको आपके आवर्ली लेस रेट से लेस कॉस्ट करता है कोई काम, जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो किसी $10 या
1000 रुपए के लिए, और वही काम आप आउटसोर्स कर सकते हो क्योंकि आपके पास काम है। मतलब आप वो काम दे सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो, तो डू दैट। यू नो 1000 रुपये वो आपके आवली रेट से कम है। यू नो वर्क एज हार्ड एज यू कैन, इवन दो यू हु यू वर्क विद एंड व्हाट यू वर्क ऑन आर मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ हार्ड यू वर्क। तो ये कहता है कि मेहनत तो पूरी करो, लेकिन किसके साथ काम करते हो और किस चीज़ पे काम कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि सिर्फ हार्ड वर्क करो आप। Become the best in the world at what you do. Keep redefining what you do until this is true. कह रहे हैं कि अपने काम में जो भी आप करो उसमें बेस्ट बन जाओ, एंड उसको रीडिफाइन करते रहो until ऐसा हो जाए कि आप बेस्ट बन जाओ। There are no get rich quick schemes. Those are just someone else getting rich off you. ये कह रहे हैं कि कोई गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोग जो आपसे अमीर बन थ्रू अमीर बन रहे हैं वही है। मतलब ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिससे आप रिच बन सकते हो। कोई बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो खुद ही अमीर बन रहा है। ऐसा कह के कि वो बनना चाहता है आपकी बेवकूफ़ी से अमीर। अप्लाई स्पेसिफिक नॉलेज विद लेवरेज एंड इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। एडवांटेज साथ स्पेसिफिक नॉलेज लगाइए और आपको वो मिल जाएगा। When you're finally wealthy, you will realize it wasn't what you were seeking in the first place, but that is for another day. Okay. Now I'll start reading. ये आपको एक brief दे दिया है, and I'll try and read as much as I can, and then once I figure out कि मैं आपको share करूँ information, I will share that information. All right, let's start. Guys, अभी तक मैंने इसके 36 पेजेस पे पहुंचा हूँ। इसमें फॉरवर्ड भी था, अबाउट द ऑथर भी है, एक कुछ स्किप पेजेस भी हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज 2 घंटे, सवा 2 घंटे हो गए हैं, एंड वी हैव रेड 18 पेजेस ऑफ दिस बुक एंड 37 पेजेस 36 पेजेस ऑफ दिस बुक। So imagine how far we are from our goal. We are yet to read, yet to complete any of the 4 book. Challenge. क्या ये चैलेंज बढ़िया है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, गाइस कमेंट तो करो कम प्लीज। इफ यू आर इफ यू हैव if you happen to see this live stream link somewhere, click on it and get on and get watch it.
Guys, I'm not sure. I mean, I know it's a pity that now people are not coming here on this live stream and they're watching it. I know nobody would notice that I said these things right now क्योंकि इतना लंबा लाइव स्ट्रीम हो चुका है and I have taken this up as a challenge to challenge me to read book continuously sitting here on this chair and not move until somebody comes along and sees that this is what we're doing. What I want to share with you is that I've read up till 42 pages here. It's a quick read. This book is going to be finished quickly, and I'm pretty sure it will. But what this writer, I mean, this is a brilliant book, and this is the beauty of reading when you get involved in it and it appeals to your heart. Time is relative. आई नो इट साउंड स्टूपिड, लगा है कि आप क्या बातें कर रहे हो। देखो, ऐसा लगता है कि जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो ना, या फिर जो चीज़ आपके दिल को छूती है, तो आपको टाइम टाइम का पता नहीं चलेगा, और वही चीज़ जब आपको बोरिंग लगेगी तो आपको टाइम नहीं कटेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हम लोग को ना बड़ा मिसकंसेप्शन है टाइम को लेके। हमको लगता है कि ये एक दिन है, 24 घंटे हैं, इसमें हमें ये काम इस समय करना है, राइट? वी हैव टू, डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। बट इफ़ यू फोकस enough, if you concentrate enough, you will be able to understand, the depth of the the work that you're doing. If I talk about books here, book that you can read quickly, understand quickly, and move at a pace which is like startling. जैसे अभी आपको शुरू में स्ट्रगल लगेगा बुक पढ़ना, पेज पलटना, समझना, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाएगा ना, वो जब एक क्यूरोसिटी डेवलप हो जाएगी, जो पैशन जिसकी बात हम इस बुक में भी कर रहे हैं, स्पेसिफिक नॉलेज आपके अंदर, वो ट्रेट आ जाएगा, स्किल आ जाएगी, तो आप ना ख़त्म कर पाओगे बुक को ऐसे, और आपको लगेगा समय भी निकल गया, पता नहीं चला, एंड यू वर एबल टू रीड सो मच इन सच अ स्मॉल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और जब ऐसा होता नहीं है तो आप बुक हाथ में है, आपका दिमाग कहीं जा रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने मतलब बाहर बाहर से नहीं कर रहा आपको डिस्ट्रैक्ट, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस हियर is I really want somebody to come into this live stream. Hey, people, please, if you are seeing this live stream on your home page of your YouTube feed, get on to this live stream. I know बोलने से नहीं होगा, somebody has to come. All right, so we'll be back to the book. I'm on 42 page 42.
All right, so I don't know. I'll just give you a brief of what these few pages have talked to me, and quickly. Okay, your summary says productize yourself. What does that mean? Productize, a word this writer uses. Yourself has uniqueness, and yourself has accountability. I hope you understand the meaning of accountability, जहाँ पे आप responsibility लेते हो कि अगर वो fail होता है, then it's you who has gone wrong. You take accountability. You're just not responsible, you're accountable. So अगर आप लॉन्ग टर्म गोल ढूंढ रहे हैं वेल्दी होने का, शुड आस्क योर सेल्फ, इज इट ऑथेंटिक टू मी? जो मैं करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सच में रियल है? मैं इसमें अपने आप को देख रहा हूँ करते हुए लॉन्ग टर्म में। क्या मैं इसको स्केल कर पाऊँ, मैं इसको बड़ा कर पाऊँगा? जैसे कि बताया गया है कि स्केल में लेबर यूज़ करके या मीडिया यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके, या मैं सॉफ्टवेयर बना के इसे बढ़ा सकता हूँ क्या? ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में, कई कई साल लग जाते हैं। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना एनर्जी। तो ये इसकी बात करते हैं। देन ही सेज कि डिफरेंस क्या है वेल्थ और मनी में। अगेन, मनी में आप सीधे ट्रांसफ़र करते हैं, आपको किसी कोई काम किया, आपने ट्रांजैक्शन की, उसका आपको पैसा दे दिया। लेकिन वेल्थ इज़ जब आप कोई काम करते हैं, उसकी आप इक्विटी बनाते हैं, और वो जब आप सो रहे होते हैं तब भी उसका पैसा आपको मिल रहा होता है। जैसे फैक्ट्री में है, फैक्ट्री आपकी चल रही है, आप सो रहे हैं, आप गए नहीं एक दिन, लेकिन आपकी फैक्ट्री चल रही है, उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बिक रहे हैं। चीज़ें बनना, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आपका रन कर रहा है रात में और वो काम कर रहा है आपके लिए, सर्व कर रहा है वो अलग अलग कस्टमर्स को। और वेल्थ एक मनी भी है बैंक में, जो कि री इन्वेस्ट हो रहा है अलग अलग चीज़ों में। वेल्थ एक प्रॉपर्टी भी है जो आप बना सकते हो। सो ये ही इज़ डिफाइनिंग ऑल ऑफ दैट, एंड ही सेज दैट जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो कहते हैं जब तक टेक्नोलॉजी वो चीज़ होती है जो कि अभी काम नहीं कर रही, लेकिन जो काम करती है तो आपको पैसा बना के देती है। जैसे जेडी रॉकफेलर, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन थे और सबसे रिचेस्ट आदमी थे अपने टाइम के। ही वाज इनटू ऑयल बिजनेस, और तब तक ऑयल किसी ने फिगर आउट नहीं किया था, क्योंकि जब तक कारें आ ही रही थी। तो जब फिगर आउट हो गया और जब पेट्रोल कारों में जाने लग गया, तो जेडी रॉकफेलर बिकेम रिच। दैट्स हाउ हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार निकाली, कार की टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई कि वो मास प्रोडक्शन हुआ और वो रिच हुए। सो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ऐसी क्या चीज़ है जो आप दे सकते हैं मार्केट में, जो लोगों को ज़रूरत है, लेकिन उन्हें पता नहीं वो कैसे लें उस चीज़ को, कैसे पाएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आप वो फ़ोकस कर पाएँगे और उसको स्केल में डेवलप कर पाएँगे, यू विल बिकम वेल्दी। दैट्स व्हाट दिस बुक सेज़। आई मीन, इट्स अंडरस्टैंडेबल एक्चुअली। मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेज़न ने फिगर आउट कर लिया कि लोगों को एक एक तरीका चाहिए बिज़नेस शॉप करने का ऑनलाइन, जिसमें वो ऐप पे जाएँ और आसानी से शॉप कर लें, और वो अमेज़न ने दिया, वन क्लिक, यू गो टू द प्रोडक्ट, क्लिक ऑन इट, बाय नाउ, एंड इट टेक्स यू टू द एड्रेस पेज वेयर यू क्लिक, मेक अ पेमेंट, गेट आउट ऑफ इट। सो ईज़ी। दैट्स व्हाट wealthy people do. And then it says, become the best in the world at what you do. This is really important. अब ये का कैसे हो सकता है? इट्स अ वेरी डीप यू नो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ आप कैसे हो सकते हैं बेस्ट किसी भी चीज़ में? क्योंकि अगर आप उसके लिए जेन्युइनली अट्रैक्टेड हैं, आपको वो एक चीज़ लगती है जिसमें आप करना चाहते हैं काम, डिस्पाइट ऑफ एवरी सेटबैक दैट यू माइट रिसीव। अगर उसमें आप सच में इंटरेस्टेड हैं, सच में आपके इंटेंशंस हैं, आप करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, तो आप उसमें बेस्ट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड उसको रीडिफाइन करें, जब तक आप बेस्ट नहीं हो पाते रीडिफाइन करें, मतलब करते रहें, करते रहें, करते रहें, जब तक आप उसको उसमें बेस्ट नहीं हो जाते, जब तक वो ट्रू नहीं हो जाता कि आप उसमें बेस्ट हैं। एंड इट सेज दैट बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। आई मीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज दैट कुछ स्किल्स होती हैं जो कि सिखाई नहीं जा सकती, मतलब आप लर्न कर सकते हो, लेकिन everybody is unique in his own ability. That's what the writer says. It says that कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे डीएनए में होती हैं, जिससे हम दूसरों से अलग यूनिक होते हैं, जो सिर्फ हमारे पास होती है। फॉर एग्जांपल, इट सेज सेल्स स्किल। आपके अंदर क्या है? कोई सेल्स स्किल है?
क्या कोई एक ऑब्सेसिव पर्सनालिटी है कि आप चीज़ों में घुस जाते हैं और उसको सीख लेते हैं जल्दी से? कोई म्यूज़िकल टैलेंट, साइंस फ़िक्शन से प्यार, साइ-फाई पढ़ना या फिर गेम्स खेलना या फिर गॉसिप करना, ये भी एक स्पेसिफ़िक टेक्नोलॉजी है, स्किल है। और इंटरेस्टिंग जर्नलिस्ट बना देती है आपको वो चीज़। मतलब ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसे स्पेसिफ़िक क्या नॉलेज है जो आपके पास है, जो लोगों के पास नहीं है? जैसे वो खुद अपनी बता रहे हैं बात कि ही वाज़ एबल टू फिगर आउट थिंग्स कि मैं कैसे एनालिसिस कर लेता हूँ चीज़ों की बचपन में। और मैं कैसे आई वाज़ एबल टू सेल समथिंग, रीड एंड क्विकली अंडरस्टैंड इट, ये मेरे क्वालिटी थे। और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम बिज़नेसमैन बनोगे। Which was really surprising. I was 15-year-old. My mother knew that I will become a businessman because I had those specific skill sets जहाँ पर मैं एनालाइज भी कर सकता था, मैं समझ भी जल्दी जाता था और मैं सेल भी कर सकता था, all of that. So he says that my whole value system was built around scientists, but when I actually look back, I ended up spending my time doing it was more around making money, tinkering technology से छेड़छाड़, selling people on things, explaining things, and talking to people. I have some sales skills, which is a form of specific knowledge. I have some analytical skills on how to make money. And I had this ability to absorb data, obsess about it, and break it down. ये स्किल्स मेरे पास हैं, ये राइटर कहते हैं। एंड ये मेरे लिए एक तरीके से एक प्ले है, खेल है। किसी के लिए काम होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ये इंजॉयबल एक्टिविटी है, मैं इसे इंजॉय करता हूँ। So that's how became he became wealthy, he says. And that's how you can become wealthy too if you're able to figure out वो क्या एक स्पेसिफिक नॉलेज है जो आपको उस चीज़ में इतना डीप घुसा देगी, आप इतना कर पाओगे अच्छी तरीके से, जिसकी जो आपके लिए सिर्फ खेल लगेगा आपको, बाकी के लिए काम। And then he says that specific knowledge is found much more by pursuing your innate talents, your genuine curiosity, and your passion. It's not by going to school for whatever is the hottest job, not by going into whatever field investors say is hottest. और फिर ये कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर वेल्दी आपको बनना है, रिच बनना है, तो वो है कि परपेचुअल लर्नर, मतलब जो हमेशा सीखता रहे। ऐसा इंसान जिसकी सीखना कभी ख़त्म ना हो। यू हैव टू लर्न एवरी डे थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट्स वॉट यू नीड टू नो। यू हैव टू नो हाउ टू लर्न एनीथिंग यू वांट टू लर्न। और ही सेज़ कि फाउंडेशन फंडामेंटल पता होना ज़रूरी है। एंड देन ही स्ट्रेस कि फंडामेंटल कैसा, मतलब कि अगर आपको मान लो यू हैव दिस बुक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या फाउंडेशन है जिसके लिए मैं वो सीख लूँ इस बुक में जो लिखा हुआ है। अम, जैसे वो कहते हैं कि फाउंडेशन इंग्लिश वर्ड, being able to convey yourself simply using ordinary English words is far more important than being able to write poetry। मतलब वो इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं कि आपको फंडामेंटल चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, और सुपर डीप आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको यू कैन ओनली अचीव मास्टरी इन वन और टू थिंग्स। एंड इट्स यूजली द थिंग्स यू आर मोस्टली ऑब्सेस्ड अबाउट, किस में आप ऑब्सेस्ड होते हैं उसी में आप अच्छा करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्लेइंग लॉन्ग टर्म गोल्स विद लॉन्ग टर्म पीपल, ही सेज दैट all the return is in life, whether in wealth, relationships, or knowledge, comes from compound interest, which it means that compounding in business relationship, जैसे कोई सीईओ है जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म का सीईओ है, वो अरबों रुपए मैनेज कर रहा है दुनिया के। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। सो द ट्रस्ट रिलेशनशिप जो उसने बनाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपाउंड, वो बड़ा है। दैट्स व्हाट इट इज़। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके रेपुटेशन पे भी होता है कि आपने एक रेपुटेशन बनाई है कि आप हर चीज़ में अच्छी डीलिंग करते हो, बेईमानी नहीं करते हो, तो आपकी एक रेपुटेशन बन गई है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। और वो खुद एग्जांपल देता है राइटर कि आई जस्ट वर्क विद एन इंडिविजुअल, ही गेव हिज नेम इलाड गिल, एंड हु ही वर्क्स विद, और थ्रू आउट, बिकॉज दैट पर्सन गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प him get the kind of business that he wants, and so the writer trusts him,
and that compounded has compounded over the years. Now वो बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, इजीली कर लेते हैं. And then he says, intentions don't matter, action do. And then he says about one thing which I agree, but it's relative. It says 99% of effort is wasted. ये कहते हैं कि हमने स्कूल्स में कितनी कुछ चीज़ें सीखी, जोग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, क्या हम इसे यूज़ करते हैं? नहीं. हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ी हैं लाइफ में अपने, जो हम यूज़ नहीं करते हैं. तो ही सेज कि 99% ऑफ लाइफ में जो भी हम स्किल्स या फिर जब हम सीखते हैं ना, स्कूल से कॉलेज तक और उसके बाद भी, वो वेस्ट होता है. एक 1% ही होता है जो हमारे काम आता है, जिससे हमारी प्रोग्रेस होती है. और वो ही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि 1% क्या है. सो ही सेज दैट आपको लाइफ में ये नहीं कि 99% आपको छोड़ देना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो क्या 1% है जो आपको आगे ले जाएगा. एंड दैट समथिंग ही सेज दैट यू नीड टू ऑब्सेस ओवर. एंड ही सेज दैट यू नो जो भी 99% आपका टाइम वेस्ट हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिम इट्स नॉट अ वेस्ट, बट ही सेज दैट इट इज़ अ वेस्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स नॉट वाज नॉट द एंड गोल. वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो आपको वैल्यू सिखाता है हार्ड वर्क करने की. एंड ही सेज दैट एग्जांपल लेते हैं कि आप शादी करते हैं, शादी करने से पहले आप डेट करते हैं कई लोगों से, मतलब वेस्टर्न कल्चर में तो ऐसे ही होता है, अब इंडिया में भी हो रहा है, where you date a lot of girls and or a boys, in girls case vice versa, and then you get to finally you get to know a person who should become your life partner because your wavelength matches. तो वो एक आध पर्सन, और कितनी डेट्स जो आप करते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आपके लिंक नहीं बैठता, इवेंचुअली आप शादी नहीं कर पाते हैं. तो वो बंदा इंसान पाने के लिए आपने कितने लोगों को पे एफर्ट डाला. तो वो वेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बट ही सेज दैट इफ़ यू लुक एट गोल वाइज, कि गोल देखें कि गोल था एक, तो इतने लोगों से मिले तब जाके वो गोल पे पहुंचे, दैट इन दैट वे इट्स अ वेस्ट. So that's what I've read until up till 49 pages. So we'll move to another section which says take on accountability. और हम इसे पढ़ेंगे. मैं इस बुक को एंजॉय कर रहा हूँ. मुझे बड़ा आई एम फीलिंग वेरी सैड दैट not a lot of people have joined this live stream, because I was hoping people will come in, people will talk about it, and people will stick with me. And maybe I was not able to create the right noise, and I'm not sure what happened, but I'm hoping लोग पढ़ें, लोग आएँ, and they read with me. It is very difficult what I'm doing for me, and I hope that it gives you some idea that you can read 2 hours 47 minutes and 40 seconds since I'm sitting on this chair and reading these books. We are on the 50th page of the almanac of Naval Ravikant. Now, I'll read.
Mosquitoes, man.
All right, so I we have it's almost 3 hours and 25 minutes. 3 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं और I've read till 72 pages. So I'll just read this out to you, whatever I've read. So till now, हमने 49 पेजेस तक पढ़ लिया था, राइट? और हमने बात कर ली 99% एफर्ट वेस्ट होता है. अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की. इसमें नवल रविकांत कहते हैं कि टू गेट रिच रिच यू नीड लेवरेज. बिजनेस रिस्क लेना सीखिए, अपने नाम पर रिस्क लेना सीखिए. मतलब यू हैव इफ़ यू हैव टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको अपने नाम पे चलाओ. जैसे अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होंगी तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पर. अ, जैसे कि कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो और उसमें यू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज़ रियली आउट ऑफ द प्लेस. फॉर एग्जांपल इलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला चलाई. पहले उन्होंने वो कंपनी किसी और की थी एंड दे उन्होंने खरीदी उसको, मतलब सबसे बड़े स्टेक ओनर बने. एंड इवेंचुअली ही स्टार्टेड, आई मीन ही रैन दैट कंपनी, ही बिकेम द मेजर इक्विटी ओनर. और फिर उन्होंने नाम पे कंपनी चली. एक बहुत बड़ा रिस्क था. अगर वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं वर्कआउट करती तो उनका नाम खराब होता, उनका हार्ड वर्क, उनका पैसा, एफर्ट, एनर्जी, ऑल ऑफ दैट वुड हैव गॉन टू वेस्ट. सेम विद स्पेस एक्स. सही सेज मॉडर्न सोसाइटी में हमें मतलब जेल नहीं होगी इस बात पे, क्योंकि अगर हमने किसी और का पैसा भी ले रखा है और उसे हम बिज़नेस चला रहे हैं अपने पैसे और उनके पैसे से, तो इवेंचुअली अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको फेलियर का टैग ज़रूर लगेगा. और सोसाइटी तब भी समझेगी उस बात को कि इसने मेहनत तो पूरी की थी, इसकी इंटेंशन सही थी, बहुत ही इंटेग्रिटी वाइज अच्छा पर्सन था, बेईमानी नहीं करी. एंड स्टिल हिज बिजनेस डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. नॉट एवरीवन इज सक्सेसफुल. ही सेज इवन देन it is okay because you took that risk, you took your name with it. And he gave his own example that 2014-15 में वो philosophy और psychological things के बारे में बात करने लग गए. और बुक भी उसका एक बाय प्रोडक्ट है इनकी. तो लोगों ने कहा कि तुम अपना करियर ख़राब कर रहे हो ये सब करके, ऐसा मत करो. बट ही kept on doing it because he thought that I want to put out my name in it because that's when the credibility will build. और उसने रिस्क लिया. ये कहता है कि मैंने सेम क्रिप्टो करेंसी के साथ रिस्क लिया जब मैंने अपना नाम लगाया कि क्रिप्टो करेंसी खरीदनी चाहिए आपको. नवल रविकांत कह रहा है. सो ये बात कही है इसमें. एंड देन इट सेज दैट people should take a lot more accountability and do not fear failure. डरना नहीं चाहिए उनको फेलियर से. कोई बात नहीं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. एंड ये कहता है कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए मतलब आपको अगर अमीर बनना है, इफ यू वांट टू फाइनेंशियली फ्री होना है, तो यू हैव टू हैव एन इक्विटी इन द बिजनेस. आई मीन अगर आप काम करते रहोगे, नौकरी करते रहोगे, तो एक आवरली रेट आपको मिलेगा. मैंने आप इतना काम किया, इतने पैसे मिले. बट लॉयर्स को भी देख लो, डॉक्टर्स को भी देख लो, जो बहुत पैसा कमाते हैं, जो बहुत अर्न करते हैं, वो भी एक जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा. और अगर कोई डॉक्टर रिच बना है तो उसने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोली है, अपना ब्रांड बनाया है, प्रॉब्ली एक प्रोसीजर इन्वेंट करी है, उसका इंटेलेक्चुअल राइट लिया है, जिसके थ्रू वो पैसा कमा रहा है, जो वेकेशन पे भी जा रहा है. तो यू हैव टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड ही सेज दैट फॉर अस टू बिकम रिच, फॉर पीपल if they want to become rich, they have to either own an equity in a company in a way of stocks and shares, or they have to build a company. They have to do it. And once you do it, you build equity in it, और आपको पैसा आप वेल्दी कम कमाते हो. जो बिजनेस चलता है तब आप उससे अर्न करते हो, जब आप काम भी नहीं कर रहे होते हो वहाँ पर. एंड दैट्स इम्पोर्टेंट. तो ये कहते हैं कि अगर तुम यू डोंट ओन इक्विटी इन बिजनेस, योर odds of making money are very slim. That's what he says. So this is what this particular you know section talks about. And then says that uh, घंटों से कभी नहीं आएगा पैसा. And then he says find a position of leverage. I mean leverage means advantage. Leverage means जहाँ आप आगे बढ़ने के लिए तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपके अंदर है, जो कि बाकी की स्पेसिफिक नॉलेज.
If you have hobbies around your intellectual curiosity, you're more likely to develop these passions. It says that अगर कोई चीज़ तुम्हें बोरिंग लगती है एक दिन और एक दिन बहुत अच्छी लगती है, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वो आपके लिए पैशन नहीं है। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा वो क्या चीज़ है आपके अंदर। एंड ही ऑल्सो स्ट्रेस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट अगर आप चीज़ें सिर्फ करने के लिए, मतलब क्योंकि वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो कुछ चीज़, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो किसी को, लेकिन वो चीज़ करनी है आपको, आप सच में करना चाहते हो वो चीज़, रियली वांट टू डू इट बिकॉज ऑफ यू, इफ यू वांट टू डू इट डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, यू विल प्रोड्यूस योर बेस्ट वर्क। एंड ही गिव्स एन एग्जांपल दैट कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसे जो कमाए वो तब कमाए जब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि वो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर मैं किसी को इम्प्रेस करूँगा, और मैंने अपना बेस्ट काम किया और बेस्ट रिजल्ट आए। इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि यू हैव टू, when you do things for their own sake, you create your best work। जब उस चीज़ को आप सिर्फ इसलिए करोगे कि वो करनी चाहिए आपको, वही करने से मज़ा आ रहा है, तो ही आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। यू नीड टू हैव फन। जितना आप कम सोचो, जितना कम ऑब्सेस कर रहे हो, आपको नेचुरल तरीके से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस बुक में समझाया गया है। आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स आई ऑब्सेस ओवर थिंग्स। सो तो कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को फॉलो करो, ना कि क्या हॉट है, क्या इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि इफ़ योर क्यूरोसिटी एवर लीड्स यू टू अ प्लेस वेयर सोसाइटी इवेंचुअली वांट्स टू गो, यू विल गेट पेड एक्सट्रीमली वेल। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी क्यूरोसिटी, जो आप जानना चाहते हो, जो इंटेलेक्चुअली आप जानना चाहते हो, काम कुछ भी हो सकता है, वो जो कि बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, यूट्यूबिंग कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, वो ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप कर रहे हो और वो क्यूरोसिटी आपको लेके आती है, और सोसाइटी आखिरकार उस चीज़ को चाहती है करना, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगी उस चीज़ को करने की वजह से। और वो आपकी यूनिक बात है, वो आपकी स्पेसिफिक नॉलेज है, एंड दैट्स वाई यू गेट पेड सो वेल डूइंग इट। बैटरी 50% हो चुकी है। ओके, फाइनल कट प्रो ट्रायल, ये क्यों है ऑन? ओके, लेट्स क्लोज इट। ऑलराइट, okay, so that's about it. And then it says that अगर सोसाइटी को जो चीज़ चाहिए और वो चीज़ पाने के लिए कहीं और उस सोसाइटी को वो चीज़ नहीं मिल रही है, एंड यू कैन गिव दैट नॉलेज टू द सोसाइटी, देन सोसाइटी विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट नॉलेज। तो इसलिए राइटर नवल रविकांत इस बुक में ये कह रहे हैं कि यू हैव टू लुक फॉर स्पेसिफिक नॉलेज जो कि एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी से आती है, जो कि आपको बिल्ड करनी पड़ेगी अपने अंदर, whether it's YouTubing, whether it's blogging, whether it's writing a book, whether it's building a product, whether it's coding, जो भी चीज़ है, जो भी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी आपकी बढ़ाती है, आप उस तरफ जाइए, ना कि उस चीज़ के पीछे जो ट्रेंड कर रही है, जिसमें एवरीबडी इज वांटिंग यू टू गो। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे क्रिप्टो करेंसी इस समय हॉट है, probably you want to it dive in cryptocurrency because somebody else is doing it and you think it's the thing that will earn you money. No, if you really want to do cryptocurrency, if you want to do it, if you want to know about it, if you're really passionate about it, if you want to explore that side of cryptocurrency, and वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एंटरटेन कर रही है आपको अभी भी और बाद में भी, यू हैव टू रियली थिंक फ्रॉम दैट माइंडसेट कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट करेगी, then go for it. And once you are able to follow your curiosity in such a way, then if society is going in that direction, he says that if more people are going in that direction, since you know it so well, that specific knowledge you have built over time, you have built that knowledge over time,
they will pay you handsomely for it. It's so important. इस चीज़ में हम a lot of people make mistakes where they just do things, because it's for money, it's for things that they, not really care for. It is very important to learn. तो ये बात ये कहते हैं, and then he says that uh, there are leverages that you can take, leverages of labor, leverages of capital, and then leverage of products with no marginal cost of replication. Let me break it down for you. He says that पहले लोग अमीर बनने के लिए फैक्ट्रीज चलाते थे, जो कि आज भी हो रहा है. ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल है. आपने लोग जोड़े, एक टीम जोड़ी और उनसे काम कराया फैक्ट्री में, और जो प्रोडक्ट आया उसे मार्केट में बेचा और उससे पैसे कमाए. That's how you can become wealthy, but it's very old fashioned way of becoming wealthy. Second become way of becoming wealthy is that when you are managing a big corporation, it could be a multi-billion or multi-million dollar company, or it could be a smaller company, but there you're not managing people. As a CEO, राइट, बताते हैं, अगर टेक्नोलॉजिकल कंपनी हटा दो तो मोस्ट ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर मिड साइज कंपनीज में सीईओ का काम होता है पैसे को मैनेज करना. ही इज नॉट मैनेजिंग पीपल, बिकॉज पीपल मैनेज करना अकॉर्डिंग टू द राइटर इज अ वेरी रिस्की जॉब, बिकॉज वहाँ पर आपको कभी पता नहीं उनका माइंड बदल जाए एंड यू आर इन अ बिग सूप. So CEOs, what they do in large corporation, manage money, and how they do it, they invest their, company's money in different areas where they're, according to their intellect, they're able to make sure that they multiply it, and the board of directors approve it. और इस तरीके से वो सीईओ भी वेल्थ बनाता है अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए, एंड ही ग्रोस. ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, बिकॉज सीईओ जो होते हैं उनको स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सीईओज sometimes are also founders of the company. The third form of capital, which is the newest form of capital, is that he says, or leverages the products with no marginal cost of replication. And that's where comes the power of coding. आप एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने की अगर कैपेबिलिटी रखते हो कि आप उसे बनाओ और उसे स्केल कर सको और उसे बेच सको, then you are in that position where you earn the most amount of money in this era, where you don't invest a lot of people, because लोग वहाँ पर involved नहीं है, कोई labor नहीं involved है. You're not involved in making decisions about multiplying money, but you are involved in a product which you have created online and you sell it. अगर आप दोनों चीज़ कर सकते हो, build और sell, कोड बना भी सकते हो, sell भी कर सकते हो, it's a double whammy. You will be unstoppable. And he says that you can also write books. You have books likhte ho, to you have just written a piece of work and you can just publish it online through ebook format or the book format. YouTube kar sakte ho aap, you podcast kar sakte ho. And he gives the example of a guy called Joe Rogan. I don't know much about him, but he makes about 50 to 100 million dollars a year through podcasting. Podcasting is a new phenomenon hai, jo ki a lot of YouTubers are now doing right now, and it is bound to make an impact in India too, just the way YouTubing made the impact from 2017-18 onwards. तो इसमें ये बुक में इस टाइप की बात करते हैं, एंड देन ही सेज दैट um, he says that the the most interesting part about is about this third form of leverage is that it is permissionless. You don't need the permission of laborers. You don't need the permission of people who would invest money in you, but you just need you, the machine, the internet, and it's done. It's as simple. Then it says. He says that what you want in life is to be in control of your time. You want to get into a leverage job where you control your own time and you are tracked on the outputs. It's very important to understand this. Uh, you know, um, he says that एग्जाम्पल्स देते हैं ये कि अगर आपने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल यू आर लेबरर, ओके, आपने कोई चीज़ फिक्स करी, उसका काम पैसा मिला और आपको मिल गया, ठीक है, यू गेट पेड फॉर इट. दैट्स वन थिंग. You are a customer service executive. You are working again you are not doing business. आपने कोई एक्स नंबर ऑफ आवर्स रखे, 8 घंटे दिए और 8 घंटे का पैसा मिल गया. तो आपका इनपुट क्या था? 8 घंटे का वर्क, और आपका आउटपुट क्या है? 8 घंटे का पैसा. तो जब इनपुट और आउटपुट ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, अगर आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ,
तो आप, you don't really scale, you don't really go wealthy. But for example, you are a real estate, you know एजेंट हु इज सेलिंग रियल स्टेट, और आप एक अच्छे रियल स्टेट एजेंट हो, मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं हो, यू आर सेलिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, और आपने एक $5 million की प्रॉपर्टी बेची, आपका इनपुट कितना लगा, कुछ घंटे, एंड यू आर एबल टू सेल दैट प्रॉपर्टी एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, से प्रॉब्ली $100,000। तो आपका इनपुट क्या था, कुछ घंटे, सेम एज somebody who is into real estate and selling property of small size, small dollar amount, but you were able to get the output of $100,000, much more than that person, because यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में डिस्कनेक्शन है। तो जितना आपका इनपुट और आउटपुट डिस्कनेक्शन होगा, अलग होंगे, दूरी होगी, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। ये भी ये चीज़ कहता है। ही सेज दैट लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड, एंड इफ यू डू बोथ, यू आर अनस्टॉपेबल। इट कुड बी रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्री। इफ यू आर इन रियल एस्टेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लर्न टू बिल्ड, कि रियल कैसे घर खड़े करने, कैसे बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, एंड सेल ऑल्सो। And he says, he's given an example here clearly, where he says that obviously to build a real estate product in the form of building, you need people, of course you need a team, but eventually you have that specific knowledge of how to build it, how to source a team, how to get team around, how to get the supervisor to get work done, and how city regulations are that you need to have knowledge of, and then eventually sell that building to the investors or to the people who want to buy, the end users. तो ये इस बुक में एक्सप्लेन करा गया है। इसमें he is talking about real estate business, and he's given that same breakup where he says that कि एक लेबर इतना कमाता है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर उसके अंडर है तो वो इतना कमाता है, इससे ज़्यादा कमाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जैसे जैसे पिरामिड बढ़ता है आगे, तो आपकी सॉरी, आपकी स्पेसिफिक नॉलेज और आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाती है, और आपका पैसा भी ऐसे ही बढ़ता जाता है। एंड सो ही सेज दैट अर्न विद योर माइंड, नॉट विद योर टाइम, क्योंकि टाइम हमेशा सबके पास एक ही है, बस माइंड यूज़ करके आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। And then he talks about something called get paid for your judgment. अब ये कहता है कि मुझे आई लव टू बी पेड प्योरली बाय फॉर माई जजमेंट एंड नॉट फॉर माई वर्क। मतलब दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आई मीन इफ़ यू अंडरस्टैंड ही व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि ऐसा काम मिले जिसमें कि मैंने जो कुछ किया उसके जजमेंट की वजह से पैसा कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया। जैसे फॉर एग्जांपल ही सेज दैट एक कंपनी में एक सीईओ है जो कि एक जजमेंट लेता है कि ये काम ऐसे होगा तो हमारा 10% प्रॉफिट बढ़ेगा। करेक्ट, ही इज टेकन अ डिसीजन, ही इज नॉट डन एनीथिंग बट ही इज टेकन दैट डिसीजन। व्हेन ही इज टेकन दैट डिसीजन, इट somebody is executing it at a lower level, but his decision allowed that team to actually do the way they are doing it right now, because that specific knowledge of doing that work in such a way is important। एंड जो सीईओ के पास है और जो पैसे बचाए, तो वो डिसीजन लेना की कैपेबिलिटी अगर मेरे पास है, वो मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं करूँगा। राइटर कहते हैं जजमेंट पे जो मुझे पैसा मिले, ना कि काम पर, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। जैसे वॉरेन बफेट के एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी, और वो इन्वेस्टमेंट टाइम करने में अपनी जजमेंट को जो लेते हैं उसमें टाइम लगाते हैं। ही सेज दैट वी वेस्ट आवर टाइम विद शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड बिजी वर्क, बट वॉरेन बफेट स्पेंड्स अ ईयर डिसाइडिंग एंड अ डे एक्टिंग। तो एक दिन पूरा साल डिसाइड करते हैं कि क्या करना है उनको, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं, और एक दिन में वो उसको कर देते हैं पैसा इन्वेस्ट। And that act lasts decades, which means that कि वो एक्शन जो उन्होंने डिसीजन लिया, जजमेंट लिया कि इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना है, वो उनको कई मतलब कई 10 सालों तक डेकेड्स तक पैसा कमा के देता है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, एंड दैट्स व्हाट ही हैज़ प्रूव्ड टाइम एंड अगेन इन द मार्केट। सो दिस इज़ व्हाट दिस बुक टॉक्स अबाउट।
And then he says, about his own journey where he has struggled to make money. He says that he's cheated out of his business partners. I mean, he's lost. The first time he made money, he lost in stock market. The second time he made money, he got cheated out of his business partners. And the third time he got lucky. Even then, he was making little amount, not a big chunk of profit, but थोड़ा थोड़ा कमाया, और वो फिर धीरे धीरे बिजनेसेस बढ़ाए, और धीरे धीरे उनकी उन बिजनेस में कमाई धीरे छोटी छोटी हुई, और छोटी छोटी कमाई ने उनको ओवर द इयर्स बहुत बड़ा एक अमाउंट दे दिया, धीरे धीरे करके. That's what he has told him here, and which is a learning for us, because we think business किया, सक्सेसफुल हुआ, और हो सकता है हम रिस्क भी ना लें, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं, चाहे फेलियर में हो चाहे वो सक्सेस में हो, हमें लर्निंग देता है, हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट टू लर्न. वी लुक एट अदर पीपल सक्सेस, वी कंपेयर आवर सेल्स विद अदर पीपल. मैं भी करता हूँ. आई एम नॉट द वन हु इज an exception, because it's human nature. If you're not succeeding, you look at the successful people. Even people tell you that क्या कोई अच्छा कर रहा है उसको देखो, and we figure out things that कि नहीं वो अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ. But we need to just be patient with the fact that कि जो मैं कर रहा हूँ मैंने उससे सीखा भी है. So he is also believing the fact that take decisions and act. And in a way, he's not said it directly, but I can understand that he took risks in business and he failed. एक बार ट्रस्ट किया बस, इवेंचुअली ही गॉट द एक्सपीरियंस एंड ही मेड मनी, राइट. एंड इंटरनेट के बाद जब ये इसकी अपॉर्चुनिटी और बढ़ गई, तो अब ही सेज दैट कि बस अगर टाइम नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई हैं, अगर उसे मतलब इधर उधर से निकल रही हैं अपॉर्चुनिटीज़. सो एंड ही सेज दैट कभी भी कोई भी आपके बारे में वैल्यू तब तक नहीं करेगा तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे. तो आप अपनी वैल्यू लगाइए कि आपकी वैल्यू कितनी है market में. And if you don't even believe in it, if nobody believes in it, you believe in it. You say that this is what I'm worth. I'm worth $1,000 a month. मैं 1 लाख रुपए महीना वर्थ हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीना वर्थ हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना वर्थ हूँ. आप अपने एक वर्थ डिसाइड करिए और उस पर काम करिए, एंड इवेंचुअली यू विल रीच दैट. एंड ही इज गिवन इन डिटेल कि वो क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका. एंड that's how it is. देन अगेन ही सेज दैट कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई काम है जो कि तुम्हारे आवली रेट से कम कमाई देगा तुम्हें, तो उसको मत करो. और तुम्हें लगता है कि कोई आवली रेट से जो कमाई आपको आ रही है, अगर उस कमाई का मतलब वही काम किसी और से करवा लो आप, और अपनी ही जो आवली रेट है उसमें से कुछ हिस्सा देकर वो कमाई कम काम हो सकता है, तो उसे आउटसोर्स कर दो. बिकॉज नाउ यू आर मेकिंग मनी एंड यू नॉट पेइंग द एफर्ट. I mean, you're not working on that particular problem. Somebody else is doing it for you, but you're just paying him, a portion of your hourly rate, and still making some money from that difference. And that's what we need to do. We need to trade, not trade our time, but trade our, you know, specific knowledge around that work. Ironically, I actually think I've beaten ye. He says that again, he says that I'm the most lazy person. अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि मैंने कितने घंटे दिए हैं काम पर और कितना पैसा कमाया है, तो मैंने बहुत कम काम किया है. That's what he says. और उससे ज़्यादा ही कमाया है. तो कि ये because it depends, because he, मैंने अपने आप को वैल्यू ज़्यादा करी, इसलिए मैं ऐसा कर पाया. Now, this is what I have read till about 72 pages. It is an interesting book. It just throws lights on some valuable and important information. The best part about this book is that if you look at it, इन्होंने बहुत ही easy to understand language में सब समझा रखा है. In fact, ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इन्होंने first chapter में ही building wealth के first few pages में, मतलब though it is 31, 32 and 33 pages, agar if you can see here, it's written like this. These small, it's one line sentences, और इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, बाकी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल. So that's what this book is all about. We have read till 72 pages and I have told you, how you figure out in your head कि वो कैसे पैसा कमाने हैं. Not even money. I mean, it's about making sure that the wealth comes to you on a regular basis. That's what you need to do. So we'll read further, and now from 72 page, I'll move to, we'll try and finish this chapter, which is on 91 page. We'll finish it. So
अनदर 18 पेजेस टू गो। मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। अभी 3 घंटे 50 मिनट हो गए हैं इस लाइव स्ट्रीम को। इस बीच में लेट मी लेट यू नो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस लाइव स्ट्रीम, हमने ये बुक पढ़ी है, इसके 18 पेज पढ़े हैं, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बाय एस राधाकृष्णन, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और former president of India, and he has written this beautiful book about Hinduism. I've read 18 pages. It is a little intellectual क्योंकि religion की बात कर रही है ये। और अब हम पढ़ रहे हैं, because I've taken a break from that book. I want to finish this chapter. I'll go back to that book again, and then we'll try and finish it. और हमारे पास अभी भी टास्क है और दो बुक पढ़ने का। कैन वी डू इट? इल बी रियली डिफिकल्ट बिकॉज 4 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हमारी दोनों बुक अभी चल ही रही हैं, ये दो बुक्स। So this is the challenge that I've taken, and why I've taken this challenge, because I really want people to know that if you really set out on doing something that you really believe in, or आपको it's your heart is into it, then some or way or the other you will be able to achieve it, and that's what I'm trying to do. मैंने अपने लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है, मतलब अगर आप देखोगे कि I want to make sure that some people who are watching this live stream, if at all, they get inspired and motivated and read books with me, one page at a time, one line at a time, and maybe they buy this book and read it and share their experience with me in the live stream later on when they see it, or maybe whenever they get the time to. I will keep doing it because I really believe in it. And if they can, just put in their learnings in the chat box, and for all of us to share. It will be such a good experience. So we'll go on this journey again. 72 pages. Once I finish up till 91 pages, I'll again explain to you whatever I've read. So bear with me, keep watching.
Now, let me give you a heads up of what I'm doing. I'm reading from 72 page onwards, and I'm trying to finish this chapter, which is basically about building wealth, and it will end at 91. So in the first few pages that I've read so far, I've read up till 72, 73, 74, 75, 76, 77. Okay, 78. All right. So what I've read, ये बात कर रहे हैं. He's basically the guy who's the writer of this book, Eric Jorgensen. I don't know how to pronounce it, but this guy is interviewing Naval Ravikant, and he's actually answering his questions. So यहाँ पे एक इंटरव्यू फॉर्म चल रहा है. ये कहते हैं कि कैन यू एक्सपैंड ऑन योर स्टेटमेंट, इफ यू सीक्रेटली डिस्पाइज वेल्थ इट विल इल्यूड यू. ये कह रहे हैं कि अगर आप अंदर मन में अपने पैसे को एक गलत मतलब ख़राब तरीके से देखते हो कि ये बेकार चीज़ है, ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी. एंड he says it because he says that अगर आप किसी साथ बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नफरत करते हो या फिर अच्छा फील नहीं करते हो, तो उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, और आपके पास कोई बैड थॉट्स और जजमेंट हैं उसके बारे में, तो वो आदमी फील कर लेगा आपकी वो फीलिंग उसके लिए. एंड बिकॉज ह्यूमंस आर वायर्ड लाइक दैट. मुझे भी लगता है कि कोई मेरे से अच्छे फील नहीं करता हो मेरे बारे में, वो तो आई कैन feel it on his face that this is how he's feeling. Or being anti wealth will prevent you from becoming wealthy. And क्योंकि आपके पास एक राइट माइंडसेट नहीं है, एक स्पिरिट नहीं है, एंड ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो आप, तो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अराउंड पीपल विद whom you are doing business, and it's so important. He says that एक बिजनेस वर्ल्ड हैज़ many people who playing zero sum games. मतलब वो देखते हैं कि भाई मेरे पास उसके पास पैसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए. ये नहीं कि वो ये पॉजिटिव सम गेम खेल रहे हैं जहाँ पर वो एक प्रोग्रेस दिखना चाहते हैं कि ग्रोथ हो. It's out of jealousy mostly. It is out of that feeling where deep down you believe that you can't make money, and uh, this is what he's explained here. And then he says, what is the most important people who are wanting to grow in life, starting out. He says you need to decide whom you are spending time with, what you are actually doing, and where you're actually living. He says that कि सिटी डिफाइन करती है कि आप करियर कितना आगे जाएगा. अगर आप इंजीनियर हैं और अच्छा करना चाहते हैं कोडिंग में, तो आप सैन फ्रांसिस्को में होने चाहिए. अगर नहीं है तो फिर यू आर लेफ्ट बिहाइंड. यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, दैट कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर. He says that we spend a lot of time on a job, but we spend very little time in deciding what job we should get into. This is a irony, कि हम लोग ये नहीं डिसाइड करते हमें क्यों करना है वो. अगर वो क्लियर हो जाए तो हम उस जॉब में जितना पूरा अपना ज़िंदगी लगाएंगे, good amount of time that we put in, most of the people put in their jobs, वो काम हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी तो हम उसे अच्छा कर पाएंगे. दैट्स व्हाट ही सेज. एंड देन ही सेज दैट whom you are with also matters. You have to really take time to choose your life partners, your friends, people who are closer to you, impact your life decisions. Those people need to be really really you know in tune with what you're doing. So this is what he says. Then he says, question से पूछा गया कि what are the 1 or 2 steps that you would take to surround yourself with successful people. He says, फिगर आउट करो कि क्या चीज़ आप अच्छी है और उसको लोगों को दो फ्री में. कर्मा हमेशा प्ले करता है रोल, ये मैं भी मानता हूँ. एंड किसी चीज़ को मेजर मत करो, मतलब देते जाओ अगर आपको देना है. अब इससे पूछा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर फर्स्ट कंपनी. इसने कहा कि व्हेन आई 1996 में होम नेटवर्क कंपनी ज्वाइन की थी, एंड आई ऑलवेज सेड टू पीपल अराउंड मी कि मैं थोड़ा टाइम के लिए हूँ, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा. And I really believed in it, though I didn't start for a long time, but still I believed कि मैं करूँगा. That's how I started. This is what he's saying that you should do. And he says that find work that is like play. That is really important. क्योंकि ह्यूमंस इवॉल्व हुए, हम सब लोग इन्वॉल्व हुए हैं हंटर्स और गैदरर्स के रूप में. हम सबको पता है, हमने पढ़ी है हिस्ट्री. लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th and 19th सेंचुरी में, वी बिकेम वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, दैन इवेंचुअली
in a specialized factories. We educated ourselves and we worked in companies, and now we're working in companies in very specialized form. But eventually, what he says that हम लोग के लिए सभी कुछ एज ह्यूमंस हम वायर्ड हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. ये तो अब शुरू हुआ है नौकरी करना, कि वी लर्नड मेकिंग मनी वाज अ नेसेसिटी. बस एक ज़रूरत थी, क्योंकि वो क्या था, एक एंड था किसी मीन्स को पाने के लिए. क्या मीन्स, खाना खाना, पेट भरना. अब हमारे लिए ये तो बन गया है, घर पे रेंट में रहना, तो रेंट का पे कर रहे हो. अगर घर ले रखा है, ईएमआई पे कर रहे हो, तो ईएमआई के लिए काम कर रहे हो. बट बैक देन व्हेन यू आर हंटर्स एंड गैदरर्स, एंड वी ह्यूमन स्पीसीज हैज spent a sizable amount of time living that life. If you compare it with what we have lived from 19th century onwards, जिससे पहले हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, उस समय तो हम खुद अपने ज़मीन के मालिक थे. लेकिन उसके बाद जब हम फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, और अब जो हम कंपनी चला रहे हैं, बहुत कम लोग अपना काम ओन करते हैं. तो उससे पहले, इवन बिफोर एग्रीकल्चर, आई मीन एग्रीकल्चर सेटअप वाज आल्सो अ सेटअप वेयर वी वर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. कि कोई कंपनी हमें, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. उससे पहले गवर्नमेंट हमें सीड्स देगी तो हम वो उगा सकेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट. अगर लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, जब हम उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 19th सेंचुरीज में, अर्ली 20th सेंचुरी में, एंड लेटर ऑन ऑल्सो. अभी भी एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे कंट्री का, स्पेशली इंडिया का. सो ही सेइंग दैट कि हमारे लिए उसमें सब कुछ गेम होता था. एक गोल दूसरे गोल को लीड करेगा. तो जब हम ग्रो अप करते हैं तो हम स्कूल गेम खेलते हैं. पहले हम बच्चे थे तो जो टॉयज़ खेल रहे होते हैं. फिर हम बड़े होते हैं तो सोशल गेम्स खेलते हैं. फिर जब और बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, तो मनी गेम खेलते हैं. और फिर जब बिल्कुल पैसे वैसे कमा लेते हैं तो हम स्टेटस का गेम खेलते हैं. इट्स ऑलवेज अ गेम फॉर अस. यू नो So he says that at some point, I believe these are all just games. These are games where the outcomes really stops mattering once you see through the games. तो आउटकम क्या है, मतलब कि क्या होगा, तुम स्टेटस में उससे बड़े दिख जाओगे, या फिर सोशल गेम्स में बड़ा दिख जाओगे, या स्कूल गेम में कुछ जीत जाओगे. तो आउटकम, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट. यू गेट टायर्ड ऑफ दोज गेम्स. क्या है कि ये कोई एंड गोल और पर्पस नहीं है. ही इज जस्ट लिविंग लाइफ एज आई वांट टू, एंड आई एम जस्ट डूइंग इट मोमेंट टू मोमेंट. और ये कहते हैं कि मैं एक ट्रेडमिल से बाहर निकलना चाहता हूँ, रेस से बाहर निकलना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं किसी को चेस कर रहा हूँ, किसी गोल को, किसी एंड यू नो आउटकम को मैं चेस कर रहा हूँ. वॉट वी रियली वॉन्ट एज ह्यूमन बींग्स इज फ्रीडम. You want freedom from your money problems, right? And once you can solve that, या तो आप अपना लाइफस्टाइल लोअर कर लो, अपने खर्चे कम कर लो, या इतना पैसा कमा लो कि रिटायर हो जाओ, राइट? सो ये सब एक्सप्लेन कर रखा है इसने. एंड देन ही सेज दैट हाउ डू यू गेट देयर. एंड ही सेज दैट ईदर फर्स्ट इज कितना पैसा कमा लो अपने पैसिव इनकम से, कि तुम्हें कोई खर्चा ना लगे भारी. सेकंड, कि तुम अपना खर्चा ही कम कर लो, या तुम बिल्कुल संत महात्मा बन जाओ. थर्ड, तुम वो करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार है, जो कि इसने पहले ही बात कर रखी है. यू एन्जॉय इट सो मच इट्स दैट इट्स नॉट अबाउट द मनी. सो देयर आर मल्टीपल वेज. एंड देन ही सेज दैट यू नीड टू बी अथेंटिक इफ यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस competition trap. You have to find things that you are better than anybody in doing. This is really important. ये पहले भी बात मैंने कर ली है ऑलरेडी. इफ़ यू लव व्हाट यू डू, इफ़ यू ऑथेंटिक, एंड अगर आप फिगर कर सकते हो कि वो सोसाइटी को चाहिए और वो उस कोर्स पे सोसाइटी भी चल जाए, तो यू विल गेन द रिवॉर्ड्स, बिकॉज आप ओनरशिप भी है, आपकी इक्विटी भी है उस काम में, एंड दैट्स हाउ यू अर्न मनी. अब we'll read further. We are on 79 pages. Let's finish it quickly and finish it, and then we'll move on to the chapter building judgment. लेकिन उससे पहले, once it's done, I'll move back to the Hindu view of life book. तो हमने टोटल कितने पढ़ लिए होंगे तब तक? 90 pages इसके और 18 pages इसके, in 4 hours 16 minutes. Oh God. All right.
All right, so we have finished the first chapter in this book too, and we have completed 91 pages. And let me give you a brief of what I have read till now. मैंने आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया है, लेकिन let me complete the rest of it. Okay. He says that okay, so we were here. कि आपका डेफिनेशन क्या रिटायरमेंट का द राइटर आस्क्स नवल रविकांत रिटायरमेंट इज व्हेन यू स्टॉप सैक्रिफाइसिंग टुडे फॉर एन इमेजिनरी टुमारो व्हेन टुडे इज कंप्लीट इन एंड आउट इन एंड ऑफ इटसेल्फ यू आर रिटायर्ड मतलब कि भाई आज मेहनत नहीं करना पड़े और कल क्या होगा उसके लिए आज मेहनत कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए जब ऐसा बंद हो जाए तो रिटायरमेंट हो जाता है कैसे पहुँचे वहाँ तक ये हमने बात कर ली ऑलरेडी आई एम सॉरी एंड मैंने ही वाज आस्क्ड जनरल क्वेश्चन की मोटिवेशन कम हो गई आपके पैसा कमाने की जब आपने पैसा बहुत सारा कमा लिया एंड ही सेज डेस्परेशन कम हो गई मतलब ये नहीं कि मैं पागल की तरह उसके पीछे पड़ रहा लेकिन मैं बिज़नेस क्रिएट करता रहा एंड मेकिंग मनी एक आर्ट बन गया मेरे लिए कि मैं क्रिएटिविटी से काम कर रहा था बस आर्ट को उस काम को उस काम के लिए कर रहा था ये नहीं कि उससे पैसा कमाना है कुछ चाहिए मतलब कोई अल्टीरियर मोटिव है मेरा मैं डेस्परेट हो रहा हूँ या फिर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है उसके लिए नहीं एक प्ले बन गया एक खेल बन गया और मैं बिज़नेस एक नया बिज़नेस 3 महीने में बना लेता था एंड रेज मनी असेंबल अ टीम और लॉन्च करना वो सब मेरे लिए फ़न हो गया एंड मैं अब इन्वेस्ट भी ऐसे करता हूँ ऐसे कंपनीज़ में करता हूँ ये कहते हैं नवल रविकांत की जहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट एक्साइटिंग लगता है वो जो टीम वो प्रोडक्ट को बना रही है वो अच्छी लगती है और जहाँ पर मुझे वाइब आती है वाली जहाँ पर मुझे काम करना चाहिए इवन इफ इट्स फेलिंग फॉर मी दैट्स इम्पॉर्टेंट ही सेज इन द लॉन्गर रन दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू सक्सीड एंड he says that you can start moving more and more toward that goal in your life it's a goal और लोगों को एक काम दिखता है मैं हमेशा काम करता रहता हूँ 16 घंटे लेकिन मेरे लिए वो प्ले है मतलब आई एम एन्जॉइंग इट सो मच इट बिकम्स अ प्ले फॉर मी एंड somebody who wants to be better at that work that I'm doing has to work for 16 hours a day जो कि उसके लिए काम होगा जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं होगा और उसको वो प्रेशर लेना पड़ेगा सो व्हाट इज सेइंग दैट मेक योर वर्क लाइक योर प्ले एंड देन इट्स सो ईजी टू एग्जीक्यूट थिंग्स एंड इम्पॉर्टेंटली जो कि मैंने सीखा है वो ये है कि डू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क and not because you have to impress somebody, you have to earn money through it, but just enjoy it. Then you will get to the deeper side of it because that's what this work is all about. To do it for the sake of it, right? कि वो काम अच्छा होना चाहिए, right? Not because वो money generate करे, because that is a byproduct. वो हो जाएगा, and that is what he is stressing on. What do you figure out? The question again, another question उनसे पूछा गया, what was your figure when you thought you were financially safe? एंड देन ही सेज दैट जनरल जवाब देते हैं कि मुझे पैसे के पीछे पागलपन नहीं था लेकिन व्हाट आई वांटेड इज फ्रीडम एंड मटेरियल प्रॉब्लम्स मनी से सॉल्व हो जाती हैं लेकिन इवेंचुअली यू नो फ्रीडम मिलता है आपको ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम जैसे फ्रीडम उन चीज़ों से जो मैं नहीं करना चाहता हूँ फ्रीडम इमोशन से मेरे कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ पैसा नहीं है इमोशनल हो जाता है आदमी गलत चीज़ों में पड़ जाता है एक फ्रीडम जो कि मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना करे ऐसा फ्रीडम मिल जाता है मेरे जिसमें पीस ऑफ माइंड मेरा रहता है तो फ्रीडम इज़ नंबर वन वैल्यू अकॉर्डिंग टू हिम कि जिस एक्सटेंट तक वो फ्रीडम मेरा खरीद लेता है मुझे मेरे लिए फ्रीडम खरीद लेता है मनी दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट और लेकिन अगर मैं वो लेस फ्री रहूँगा उस मनी की वजह से कि मैं पागल हूँ उसके पीछे और कमा रहा हूँ और मैं और फंस जा रहा हूँ काम में तो फिर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डू आई हैव टू स्टार्ट अ कंपनी टू बी सक्सेसफुल एंड ही सेज people who are venture capitalists are more successful they earn more money even if they don't start a company they invest in companies which are will make money eventually so उनके पास expertise team और वो resources होते हैं जहाँ पर वो
इवेंचुअली उन कंपनीज को फिगर आउट कर लेते हैं जो कि पैसा कमा के देंगी। और फिर इसमें एक एग्जांपल देते हैं ये कि कि if you want to start in a company, make sure that you have this alumni network जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज में है, एंड देन दे विल अब्जॉर्ब यू, एंड ऑल्सो स्टार्ट इन अ कंपनी विच इज स्मॉल, बिकॉज उस समय उसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड नहीं होता है और हायरकी ऐसे बिल्ड नहीं होती कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जस्ट बेट ऑन कंपनीज विच आर स्मॉल एंड फिगर आउट योर एलुमनाई नेटवर्क कि किस कॉलेज से आप पढ़ के आए, तो कौन से कॉलेज में आपको कौन सा यू नो यू नो साथी है इस कंपनी में, दैट यू कैन जॉइन, दैट यू बिलीव इन, दैट यू लाइक। So, for someone who's early in their career, or maybe even later, the single most important thing about a company is the alumni network you're going to build. Think about who will work with and what those people are going to do. People are going on to do. How to get lucky? Why do you say getting rich without getting lucky? इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा है कि luck I don't believe in. I mean, because luck क्या होता है? luck होता है कि या फिर एक blind luck, आपकी लॉटरी लग गई, आप कामयाब हो गए। एक होता है कि हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, मेहनत करी, आपने एनर्जी बिखेरी, हसल किया, आपने बहुत एफर्ट पुट इन किया, एंड थ्रू दैट यूनिवर्स गिव्स यू अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लक, और वो मिल जाता है आपको। एक अलग लक होता है स्पॉट करने का, जहाँ पर आप किसी अपनी फील्ड में बहुत स्किल्ड हैं और आप पेशेंटली वेट करते हैं एक ब्रेक मिले, और जब कोई वो देख नहीं रहा होता है, यू गेट दैट ब्रेक, सेंसिटिव होते हैं उस ब्रेक के लिए, लक, तो लक आपको मिलता है। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ लक इज द वियर्डेस्ट, ही सेज द हार्डेस्ट है, जिसमें यू बिल्ड अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ योर्स, एक यूनिक ब्रांड, एक यूनिक माइंडसेट which causes luck to find you, which he emphasizes the most. He says that कि जो भी आप काम करो, अगर उसमें यूनिक हो जाओ आप, दी बेस्ट हो जाओ आप। और मुझे भी ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, मतलब जो मैंने पढ़ी इस चीज़ को, तो लक आपको ढूंढेगा, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव फिगर्ड आउट अ वे टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस और यूनिक, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन डिलीवर दैट। एंड ही गिव्स एग्जांपल कि एक ऐसा ड्राइवर आप हो जो कि डेप्थ ऑफ ओशन में जा सकता है, और वो सबसे गहरा सी डाइव कर सकता है। तो आप एक यूनिक पोजीशन में हो कि कभी कोई ऐसा आदमी जिसके पास ऐसा काम हो, जिसको अचानक से कोई ट्रेजर मिलता है जो कि बहुत गहराई में है समुद्र के, तो वो आपको अप्रोच करेगा, एंड उसका लक आपका लक बन जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ट्रेजर है, आप जाओगे और कोई नहीं जा सकता, and you bring me that wealth, I'll give you half of it. It is a story that he is just telling. He's saying that you make your luck like that also by being unique in the industry. So he said that if you are, the best form of luck is this, where you are working hard, and just not hard, you're making your brand along the way. You're the best at what you do. That's what you're doing, and refine it so much that it becomes true that you are the best. You are the most unique personality doing what you do. And if society wants it, and society is going in that direction, they will pay you the best. Opportunity will seek you out. Luck becomes your destiny. And then उसमें एक लैंग्वेज दिया, उन्होंने लिखा है कि it start becoming so deterministic, it stops being luck. Then the definition starts fading from luck to destiny. कि वो आपका destiny बन जाएगा. This is really important. ये बातें हम पढ़ तो लेते हैं बुक में, बहुत इंजॉयबल भी लगती हैं, लेकिन जब इसको रियल लाइफ लेसन्स, मेरे ख्याल से तब होगा जब आप यू आर लाइक यू। आई थिंक आई व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बुक इज द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट दिस बुक इज गिविंग एट ऑन एवरी पेज, एवरी स्टेप, एंड इट्स नॉट गिविंग some rata pita dialogue, but it's really making sense that if you are good at something, so you, but कैसे होगा, this is something which is very different. Again he's saying that कि एक आपको specific knowledge अपनी gain करनी पड़ेगी उसके लिए। All right, and then he says that कि reputation, एक character आपको बनाना पड़ेगा money को लेकर, कि आप लोग आप पे trust करें, तो वो अगर आप ऐसा कर सकते हो with the years, तो वो आपको you know अगर आप ट्रस्टेड, रिलायबल, हाई इंटीग्रिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डील मेकर हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं। अभी कहता है हाउ इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग, क्वेश्चन पूछता है राइटर, एंड ही सेज दैट इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी चीज़ अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हैं जहाँ पर आप
उसको बताएँगे उसके बारे में बार-बार लोगों को, तो राइट लोग आपको खुद ही ढूँढ लेंगे। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले लोग नेटवर्किंग करते हैं। इट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू बिकॉज़ देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी. You should put your time and energy into building that product and showing it to people, then making sure that you define your strategy in a way that it becomes a selling product, a selling service. And once that happens, right people will get attracted to your product. And once you met someone, who how do you determine if you can trust someone कि अब अच्छा किसी को मिल गया तो ट्रस्ट कैसे करोगे कि उसके साथ बिजनेस करें. तो क्या सिग्नल्स इन पे अटेंशन आपको देनी चाहिए. तो ही सेज दैट it has to be somebody, somebody who's genuine. And basically he's saying in this particular part where he says that I have great people in my life who are extremely successful, very desirable, very smart, yet I have seen them do one or two things slightly not great to other people. मतलब ऐसे इंसान अगर हैं आप जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं या फिर नुकसान कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर ट्रेट है, अगर आप स्मार्ट भी हैं तो मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहूँगा. फर्स्ट आई वार्न देम कि यार तुम्हें जो कर रहे हो सही नहीं. सेकंड टाइम आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम बिकॉज उनके कैरेक्टर में, उनकी बिहेवियर में वो बात नहीं आ रही है जहाँ पर वो सही है, और मैं उनसे अलग हो जाऊँगा. ही सेज दैट कि उसकी वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए. सो दैट्स द पार्ट कि इफ़ द क्लोज़र यू वांट टू गेट टू मी, द बेटर योर वैल्यूज़ हैव टू बी. तो एक वैल्यू, उसके संस्कार अच्छे हों. दैट्स द पॉइंट. एंड द लास्ट but not the least, this is the most important thing that I need to understand in my life, because for me, this is the most important thing. And he says that be patient. One thing I figured out later in life is generally, at least in the tech and Silicon Valley, कि जो लोग बहुत ब्रिलियंट होते थे ये कहते हैं, जो अपने अपने करियर के 20 साल पहले मिले, मतलब आज से 20 साल पहले जब मिले वो उन लोगों से, और जो बहुत ब्रिलियंट थे, जो कि बहुत डेडिकेटेड थे अपने काम में. तो मैंने कहा कि यार तुम लोग क्या अमेजिंग काम करते हो, कितने डेडिकेटेड हो, तुम बहुत अच्छे करोगे. वो इवेंचुअली बहुत सक्सेसफुल हुए. दैट्स व्हाट ही सेज. ही सेज कि उनको टाइम लगा, उनको कोई झटके में सक्सेसफुल नहीं हुए, कई साल लगे, लेकिन इवेंचुअली उनकी मेहनत रंग लाई. तो व्हाट इज सेइंग कि जब आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हो और उसको एडवांटेज पोजीशन पे लाते हो, तो इवेंचुअली तुम वो मिलता है तुम्हें जो तुम डिजर्व करते हो. इट टेक्स टाइम. और कभी भी इस चीज़ को काउंट मत करो, क्योंकि काउंट करोगे तुम्हारा धैर्य, पेशेंस खत्म हो जाएगा. एंड दैट्स समथिंग व्हिच आई need to understand as well. I mean, for me it's so important to be patient, to be able to grow. I think somebody, it is an important thing for everybody. हम लोग जनरली बहुत जल्दी बहुत सब चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, स्पेशली तब जब हम कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से अपने एग्जाम्पल्स को. बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट हिज way of doing things is unique to him, and people have loved him for various other reasons, but maybe he's doing a side hustle that you're not aware of. That's why people are attracted to him. Maybe he's doing something that you cannot figure out at this point in time in your life, and that's why he's successful. Maybe it looks to you that it's so easy and it's similar to what you're doing. Probably you are getting influenced by what he's doing, and you copy the same work ethic, and still you feel कि यार उसने भी वो किया, मैंने भी ये किया है, तो मैं क्यों अलग हूँ, मेरा क्यों नहीं चल रहा. So all of that comes to your mind, but it's not important because he is unique in his own way. You shouldn't copy him, and you should have your own style. And this book explains to you in detail. मतलब ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि यार इम्पेशेंट हो जाते हैं कि जब वो देखते हैं कि वो बंदा तो अच्छा कर रहा है इसी चीज़ को करके, और मैंने जैसे मैं भी वही कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा, क्योंकि वो कर रहा है तो वो कॉपी कर रहे हो. एंड इफ़ यू स्टार्ट doing things which is unique to you, then only you will leverage yourself in the market, get into this advantageous position. There's something which I need to learn. And also he says that you need to stop counting, कि कब कामयाब हो गए, कैसे हो गए. Just keep doing what you do and get better at it, and be in a position where you are at leverage, advantage.
and you have to enjoy it and keep doing it and keep doing it and keep doing it. Don't keep track, don't keep count, because if you do, you will run out of time. This is the most important lesson that I have learned in this book so far, along with whatever I have spoken right now. You have to enjoy it and keep doing it and keep doing it, and don't keep track and don't keep count, because if you do, you will run out of time. Okay. And he says that the only way to truly learn something is by doing it. Listen to that guidance, listen to the advice, but don't wait. If you want to truly learn something, you have to do it, and then only you will learn. And he says कि जब आपने रिज्यूमे पढ़ोगे, मान लो फॉर एग्जांपल अपने डेथ बेड पर हो, आप मरने वाले हो, एंड तो रियल रिज्यूमे में जो आप बातें याद रखेंगे वो होंगी आपकी सफरिंग्स की, जो आपने परेशानियां झेली हैं। अगर आपके डेथ बेड पे आपसे पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी की क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रही, तो राइटर कहते हैं आप कहोगे कि जो सैक्रिफाइस आपने करे अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, जो मुश्किल चीज़ें आपने करी। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोज़ हार्ड थिंग्स, दोज़ डिफिकल्ट थिंग्स, दोज़ सैक्रिफाइसेस मेक our life what our life is. Not the success, not the rich house that we are sitting in, the rich, you know, atmosphere that we have surrounded ourselves with. This is what he says is important. And then he says, money buys you freedom in material world. It's not going to make you happy. This is very important. It's not going to solve your health problems. It's not going to make your family great, क्योंकि फैमिली ग्रेट तब बनेगी जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो आपकी फैमिली से। हेल्थ प्रॉब्लम जब अच्छी होंगे जब आप अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को ध्यान रखते हुए, बिना स्ट्रेस लेते हुए अपनी ज़िंदगी जीते हैं। But it will solve your external problems, like it is, you know that's how why money is needed. Money is giving a very good picture of money, कि मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा मनी आपकी। एंड ही सेज दैट कि मैंने बहुत से वेल्दी लोगों से मिलता हूँ जो अनहैप्पी हैं। हम लोग ये सुनते रहते हैं, लेकिन why he's saying so is because he's giving a practical advice again. He says there is a practical advice here. He says कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग जो पैसा बहुत कमा रहे हैं, उन्होंने हाई स्ट्रेस, हाई एंग्जाइटी और हाई हार्ड वर्किंग और कंपेरेटिव लोग होते हैं वो। और ऐसा उसको इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कहीं कहीं 50 साल अपने करियर के दे रहे होते हैं उस काम को करने में। और जब वो होता है काम, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रेस भी लिया होता है इन द प्रोसेस, क्योंकि वो ऐसे बन चुके होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो चुकी होती है कि इवेंचुअली जब 50 साल बाद उनको पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, जो रिच होते हैं, they cannot get rid of their habits, these bad habits of taking stress, taking high anxiety, and becoming hard work तो अच्छा ही होता है, लेकिन अगेन तो वो चीज़ें उनके अंदर वो इनग्रेन्ड हो जाती है उनकी पर्सनालिटी से। दैट्स व्हाट ही सेज। And then he says that let's get you rich first. I'm very practical about it because Buddha was a prince. He started off really rich, then he got to go off in the woods. ये प्रॉब्ली an indication है नेक्स्ट में क्या फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आप अमीर हो जाओ, लेकिन आप समझ पाओगे कि पैसे की ज़रूरत कितनी कम है ज़िंदगी में, क्या ज़रूरी है वो एक इंटरनल पीस। और ये कहते हैं कि पहले लोग जब शांति चाहते थे तो सारी चीज़ें छोड़ देते थे और जंगलों में चले जाते थे और वहाँ जाके वो भिक्षु बन जाते थे, संत महात्मा बन जाते थे। लेकिन आज पैसे की वजह से, इन्वेंशन से, हम पैसों को बैंक में रख सकते हैं और तब भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं हम। और छोटे-मोटे पैसे से ही हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और एक अच्छा फ्रीडम ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक आज़ादी। और वो एनर्जी और टाइम देगा आपको परस्यू करने के लिए इंटरनल पीस और हैप्पीनेस को। एंड आई बिलीव सॉल्यूशन तभी मिलेगा आपको जब सो लोगों को वो दे दो जो उनको चाहिए। सबको रिच बना दो, यू नो उनको फिट एंड हेल्दी बना दो, उनको हैप्पी बना दो। And then this book ends with a quote. He says, amazing how many people confuse wealth and wisdom.
The second part is building judgment. There is no shortcut to smart. And I'll read it later. I'll go back to the same book again. It's 4 hours and 50 minutes since I have been sitting on this chair. Guys, क्या मुझे पता है it's really 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 late. It's 3 o'clock in the night. In the morning 3 a.m. बाहर बारिश हो रही है. We are almost sitting 5 hours, 4 hours 50 minutes 33 seconds. अगर ये आपको इंस्पायर नहीं करेगा तो I'm not sure क्या करेगा, because that's how I am inclined to read and read and read. And this is a marathon. It's not a sprint. It's not a kilometer. It's not a 20 kilometer. It's a 42 kilometer dam race. And in my case, I've already run a marathon of sorts. मैंने 4 घंटे 50 मिनट 51 मिनट कर लिए हैं एग्जैक्टली. 1 सेकंड 2 सेकंड बढ़ता जाएगा ये. तो ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हैं. सिर्फ 8 9 मिनट रह गए हैं. 9 मिनट 55 सेकंड. 9 मिनट 50 सेकंड. 8 मिनट 50 सेकंड. 8 मिनट 45 सेकंड. लेकिन हम पढ़ते जाएंगे कि दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर टुडे, एंड वील कीप वर्किंग हार्ड. चैप्टर 2, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स, द हिंदू एटीट्यूड. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बुक पढ़ के मुझे भी बोरियत सी हो जाती है, द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन. एंड दैट्स व्हाई वी रीड द बुक लेटर ऑन द नेक्स्ट डे. एटलीस्ट इन माई केस, मैं जब पढ़ लेता हूँ उस बुक को, एक बड़ा चंक पढ़ लेता हूँ बुक का, तो मुझे लगता है कि इस बुक को अब नेक्स्ट डे पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रेपिटेटिव हो गया है. वही फिलॉसफी, वही ज्ञान, या वही कैरेक्टर्स मिलेंगे तुम्हें. यू फील सो रेगुलर एंड यू वांट टू एक्साइट और प्रॉब्ली पुश योर ब्रेन टू अनदर डायरेक्शन, into another activity. So in this case, since we have to just read, we'll stop this activity of reading this book and read this book now. हमने इस बुक में क्या क्या समझ लिया था अब तक? हिंदुज़म, वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट डीटीज पर्सपेक्टिव से, वेदास के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, कैसे हम लोग जो सीयर्स, जो महान यू नो हिंदूज ट्रेडिशन में जो महान योगी रहे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग बिलीव करते हैं, और जो सुप्रीम पावर होती है, अगर हम अपने अंदर देख लें, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है. सो वी रीड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स, द हिंदू एटीट्यूड. मैं थोड़ा थक रहा हूँ, एनर्जी थोड़ी डाउन है, तो I'm not sure how it's going to be. I'll re-energize myself, but maybe I'll take a walk. I'll walk. What do you think, guys? Not many people are tuned into this live stream, I know. Another 7 minutes, I'll get up. Though I didn't want to get up, trust me, I wanted more people to follow and see this channel, so that they, come on the readings, come along with me and read a book. But it hasn't happened so far. I'm hoping it will happen at some point in time. Till then, I'll keep reading. I want you to read with me, and I hope it makes sense.
All right, guys. We have completed 5 hours, and it's almost, you know 3:13. I was expecting a lot more participation, but somehow, there's a way. Probably it just doesn't work this way, when people come in and join the live stream. But I'm hoping it happens as days go by. I'll continue this stream tomorrow. I'll probably publish the time when I'll start, just now before I will start. कुछ घंटे पहले ये मैं बता दूंगा, या कुछ ने 1-2 घंटे पहले कि मैं ये लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ. हो सकता है मैं सुबह उठते ही लाइव स्ट्रीम करूँ. कल वीकडे है, और कल क्या थर्सडे हो ही गया है. सुबह के 3:15 हो रहे हैं, और लाइव स्ट्रीम कल कंटिन्यू रखेंगे. मैंने एल्मनक ऑफ रविकांत के 95 पेजेस पढ़ लिए हैं, 90 पेजेस इन ऑल. और हम कल बिल्डिंग जजमेंट पे बात करेंगे. और द हिंदू लाइफ, व्यू ऑफ लाइफ के फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. सेकंड चैप्टर के भी 2 पेजेस पढ़ लिए हैं, लेकिन वंस वी एनालाइज एवरीथिंग we'll go further, right? And that's it. And that's about it. And hopefully we'll finish these 2 books as quickly as possible tomorrow, and then we'll jump on to these 2 books. That's the target. मैं और motivated होता पढ़ने के लिए, शायद लोग आते. Probably it's a weekday, it's not happened, that's why. But we'll continue in the weekend also, and we'll try and attract people. This is the mission that we need to keep. I mean, if we work together, you and me, right now just me and few people, but it will happen, and that's what I believe in. So thank you so much. Take care. Bye bye.